मु तार गोटे छोट पीपीटी सब करछि सेथरे आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग एंड एट द एंड ऑफ इट then I will give one model answer. Okay, are you all following me? Aji ame will try to finish about 4-5. So the whole idea is je through this question tomorrow say issue tare pura complete depth rahibo and you will also know how to give a model answer. Is that correct? Is the approach on it? People should give some idea. Ha. What is कहबी सो फर्स्ट हाँ जेमती कहले जे तमर कोन आइडिया अछि ता आल्सो आई विल टेक दैट सो वी विल हैव एन इंटरैक्टिव सेशन तो बुझा इंग्लिश ला बुझा तमर यू आर एबल टू फॉलो व्हाट आई एम सो क्वेश्चन हला जे व्हाट वाज सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन द IR Coelho case. This was a case in 2007. Please note down 2007. This decision was given in 2007. And how does it reinforce? Please mark the word reinforce. Reinforce money, that means there has been some earlier judgment. Please come, please sit down. Reinforce money, जो कथा टक हम बारंबार कहूचे, हला? Please remember that. So that means ए जो जज बस गोटे खाली देखि दियो हां तो कहले हां बस मु गोटे तमे देखि ताले तमे सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज सो रीइंफोर्स गोटे जिंस मन रखियो सबले बोथ इन द OS एंड इन द IAS सब क्वेश्चन रो डेप्थ में देखिबो few things I thought I'll just mention to you before we come to the answer. गोटे क्वेश्चन रो सब प्रथमे ताकू पार्ट्स करिवो से क्वेश्चन रे कोन सब पार्ट्स अछि हला क्वेश्चन पार्ट्स पर देखियो किछि इंटरेस्टिंग वर्ड अछि किछि इंपोर्टेंट वर्ड अछि कि हला सो पार्ट्स करा पर आउट कथा तुमको फंडामेंटल कथा कहूची जे तुम माने जो माने सब प्रीलिम्स पाई करी मेन को जिवो यू विल हैव अ सर्टेन स्टैंडर्ड ओके माने एमिति नाही जे तुम कंप्लीटली यू आर अनअवेयर ऑफ व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू एमिति नाही जे तुम बेसिक स्ट्रक्चर ता बुझुनो मोस्ट ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर माने लाइक ए पैरेट वी कीप ऑन सेइंग दिस सो आमर कथा होची जे तमे गोटे जस्ट रिमेंबर दिस एज अ गोल्डन प्रिंसिपल बिकॉज़ आई हैव टॉट अबाउट 13 बैचेस बुझलो त जे तमे गोटे मन रखियो जेतले में मेन को चली होचे सेते बेले as examiners we also know जे तमर गोटे मिनिमम नॉलेज अछि मिनिमम ग्रिप अछि अंडरस्टैंडिंग अछि. So on an average, a student will get about 4 marks out of 10. बुझो त around 4 marks you will get जब तमे गोटे आंसर ता ठीक ठाक लिखिलो तमे तो रीजनेबल भलो आंसर कलो ताले 5 रु 6 रखिबो किंतु तमे जे बढ़िया आंसर ता कलो it goes to 8. Please remember this. माने it is not 6 plus, it becomes 8 plus. जे तो बढ़िया आंसर करछे. So are you all getting me? तेरो तमे जदी गोटे गोटे आंसर रे तमे 4 मार्क्स अधिक रखिबो फ्रॉम अदर्स तमे गोटे बहुत सब्सटेंशियल एज रखिबो एटा सबले मन रखिबो माने यूपीएससी रे तमे मेन परीक्षा में आछे इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ओके सो व्हाट आई जनरली डू टू माय आईएएस स्टूडेंट्स जो माने मेन को आछंती सो व्हाट आई डू टू देम ए मॉडल आंसर सुडा का करि कि 200 250 वर्ड तक जो कर दिए से मन सब पाई जाउछंती कारण से माने धर 10 टा 6 टा भी आंसर कले बिकॉज़ 6 टा क्वेश्चन से माने 7 मार्क पाउछंती सो दे आर थ्रू कारण 40 मार्क पाइले तुम पाइलो 100 रु तुमे आर यू ऑल फॉलोइंग मी हैव यू अंडरस्टूड द स्ट्रेटजी तमे जे 100 रु 40 पाइलो ताल तुमे थ्रू हलो सो फॉर गेटिंग 40 यू नीड टू आंसर एटलीस्ट 6 वेयर यू गेट 7 प्लस इट हैव यू अंडरस्टूड तापर जे हला तुम तो पोजीशन तुम माने प्रथम कथा हला यू शुड बी श्योर जो माने ऑनलाइन रे अच्छा जो माने यू हैव टू फर्स्ट मेक योरसेल्फ श्योर दैट यू आर गेटिंग मोर देन 40 फॉर गेटिंग 40 तमे एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन जदी बढ़िया के आंसर कलो ओके ताहले तमे पाइबाटा सुनिश्चित कि यदि एवरेज कलो ताहले कोन हो ना तमरो न पाइबार चांसेस ता बहुत रहइबो दर हां now let us disaggregate the question हमें disaggregate करिवा प्रथम हला
तमे लिख आयर केलो केस माने से जाने चाहूची जे तमे गोटे इंपोर्टेंट जजमेंट हला आयर केलो जजमेंट ए जजमेंट तमे जानि चकी लिख फर्स्ट पार्ट रहला ए क्वेश्चन रे हमें जानियो चाहे जी आयर केलो केस ता कोन सेकंड हला how does it reinforce please note down the word there's a word called reinforce the importance of judicial review ଗୋଟେ word ଲେଖା judicial review so ए आंसर से जानियो चाहूची judicial review ता कोन थर्ड कथा जानियो चाहूची बेसिक फीचर ता कोन आउ कोन ता जानियो चाहूची रोजलिन कहि परिबो व्हाट इज द क्वेश्चन एक्सपेक्टिंग no when it is saying reinforce tamane there has been earlier judgments they want to know whether you know about the earlier judgments is it clear तो तमे कौन जाना कथा आयर केलो जजमेंट जानिया दरकार आयर केलो रो पूर्वरु किछि से समान इश्यू रे किछि जजमेंट हेछि कि just taking you step by step आयर केलो पूर्वरु की जजमेंट हेछि कि नहीं थर्ड हमें क्लैरिटी आसी कोथरे बेसिस आसी दरकार तापर हमें क्लैरिटी आसी कथा जुडिशियल रिव्यू रे इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू प्लीज is that clear to all of you are we on the same page all of you are we on the same page मु तुमको इन्वॉल्व करी डोंट वरी प्रथम क्वेश्चन टा कला पर तुमको मु बहुत जबरदस्त इन्वॉल्व करी किंतु प्रथम मु लेट मी टेक यू द बेबी स्टेप छोटे पे तुमको अंगूठा तुमको उठी की चला दो तापर तुम दौड़ियो तापर देखियो तुम केते दौड़ियो तापर देखिबा बुझले कि सो विल सी हाउ फार यू रन मु पीपीटी आस तो पीपीटी कर दियो so today we will do this we will do about 3-4 model questions today okay ठीक हो तुम बुझी पड़तो कथा ना ताले एथर तमर कॉन्फिडेंस असले even some of you who are taking this civil service IAS also this will be the level at which the it would IAS level ro question eta भी IAS रे मजा civil service रे ए भला question आसुची ए जो question टा this question धर जे आर केलोटा जानिनी किंतु प्रेसिडेंट जाननी से चार रे रहइबो सो हमें सो ओके सो हमें जीवा वर्तमान से फर्स्ट क्वेश्चन रे जीवा जे आयर केलो केस रे हमें द होल इशू प्लीज नोट डाउन द होल इशू इज नथिंग बट जुडिशियल रिव्यू of the 9th schedule. Are you all following me? A question ro sabu marma hala je pura marma ta yala mu ko janchi ha so kon issue ta rahla judicial review of the 9th schedule तो से जानियो को चाहूची तमे गोटे 9 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन रो अछि कि नाही तमे जानि छ कि नाही आर यू ऑल गेटिंग मी हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे 395 आर्टिकल अछि ता परे 11टा 12टा शेड्यूल अछि सो से जानियो को चाहूची द आंसर रे जे तमको जणा अछि कि 9 शेड्यूल ता कोन बोली और 9 शेड्यूल ता असला केबे आर यू ऑल गेटिंग मी सो नाउ 9 शेड्यूल असला केबे एनीबॉडी First amendment to the Indian Constitution. Kebela 1951. 1951, there is the first amendment to the Indian Constitution. If you remember, our जो parliamentary में जो debate हो, constitution पे debate होता था. Have you heard about it? What debate चलता था? our constitution ऊपरे 76th year ऊपरे पूरा entire parliament session was devoted to constitution. तो टिके अवेयर रहो ए जिनसोडा टिके एडा इंपोर्टेंट जिनस एडा अवेयर रहबो कारण तुम इंटरव्यू भाबो तुम छोड टिके अवेयरनेस इज एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट को कथा बुझो तो नाइ सर मु तो टीवी देखुनी मु किम जानिनी एडा कोन सिम चलिबनी यू टू बी अवेयर तुम गोटे ता भीतर पॉसिबल किंतु गोटे एते पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल डिसीजंस एंड डिस्कशन से थरे entire winter session was spent
on discussing Indian constitution. सेइथरे हमर जो बीजेपी माने हमर जो एनडीए गवर्नमेंट तांकर पोजीशन हला, so they wanted to criticize the Congress government. Hela? So Mr. Modi, our Prime Minister, started by attacking the First Amendment. When he started speaking, he first attacked the First Amendment. कहाँ से कले? तांकर basic objective हला जे leader of the opposition जे हमर राहुल गांधी अछंती सब संविधान देखौचंती, से कहउचंती जे तमे संविधान देखौच, संविधान रो जे बापा ग्रैंडफादर जे हमर जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट अमेंडमेंट करथिले से कोन करथिले, तमे भीतर जे कहि दो जे फर्स्ट अमेंडमेंट रे कोन कोन थिला तारे जी कंप्लीट कर दो से आज शॉर्ट अमाउंट नो. Are you all getting me? Is it all right? Deepak, is this where is it all right? First amendment रे कोन थिला को किछ भूल करले को तो गोटे ताली गोटे मार दबो, तो ताली मार टिके, तो ताली मार गोटे, तो ताली मार सब करिया सब करिया सब करिया सब करिया. Just listen to me. Socially and economically backward sections, backward section by reservation in educational institution. या कहूत तमें तो नाटक कौन करो बादल एटा कहूतला अपन तो एटा को आर्टिकल ऐड हला आमे बर्तमान डेफ्थ को जीवा एमती कहले किम हबो एम सुना एम की पाई सुस्तो. Yes, anybody in the online? What of the 16 give him a big hand. 15 sir. Have you understood? जो पिलाटी 15-4 कहला से गेट रे पसला, जगन्नाथ मंदिर रे पसला, बाकी सबो से बाहर तबे से जो अछि जो बेडा अछि से बुरुच बसी के सुसु फुसु करी पळे आसला किछि भितर किछि पछर प्रश्न उठोनी. नन ऑफ यू हैव प्लीज नोट डाउन 15-4 ए गोटे भलगिरी कर दो ताल तुम जानि मता कॉन्स्टिट्यूशन डेप्थ कोन तुम जानि मता. सो द फर्स्ट अमेंडमेंट envisaged reservation for whom? For socially and economically backward sections and scheduled caste and scheduled tribe. Please note down. SC, ST और जो माने socially economically backward तांको पाई reservation एटा 15-4 रे इंट्रोड्यूस हला. एटा काहे की हला कि जो कहि दो से पाइबो आउ सटा पाइबो कोटिया काहे के इंट्रोड्यूस कर कोन तकर पा ता कोन बिछा खाबुला ना कोन त मुसा कामुला जे काहे की मसा कामुला जे काहे की एटा अमेंडमेंट करे नहीं सर चंपकम दौराजन केस नहीं एमिति गोली मारले हां किए कहंतु सर कहंतु सर चंपकम दौराजन केस जो तमिलनाडु गवर्नमेंट एग्जैक्टली चंपकम दोरायराजन केस ये देखु छ पिले तम भितरे चंपकम दोरायराजन कौन ये सर कौन टा चंपकम दोरायराजन जजमेंट टा कौन थिला रे कि कहि दिला टिके ऑनलाइन रे व्हाट आर द सर तमिलनाडु गवर्नमेंट एससी पिला को पई रिजर्वेशन देथिला तेनु सर चंपकम दोरायराजन जण ब्राह्मण लोक थिले कोर्ट रिजर्वेशन देथिला कोर्ट रिजर्वेशन करथला मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज रे सर मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु गवर्नमेंट प्लीज नोट तमे तो डेप्थ रे जाओ टिके डेप्थ रे थोरटी पढे दे पाने तमे जहा क्वेश्चन आसीबो तमे यू विल हैव नो डिफिकल्टी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मु केवल क्वेश्चन टा आंसर करनी तो पूरा डेप्थ रे रहउची. अरे सुनो टिके चंपक ए जो तमिलनाडु गवर्नमेंट यस सर ये जो 15-4 अछि सेटा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड अछि सर, इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं. ठीक अछि सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड ठीक अछि. हां ठीक अछि. तमे सेही तुमको आसो आगु को आसो तमे टिके आगु आसो तमे आगु आसो टिके. वेरी गुड
socially and educationally backward. Economically लिखर गोटा reason अच्छी ए तीनटा factor मिसले OBC हबो. Please note down. ए तीनटा factor हेले OBC हबो. Socially, educationally, economically हेले एटो कमे OBC कहूचे. Please note down. एटा परे Supreme Court has clarified. हैला गोटा OBC please note down. जदि OBC पे कौन दरकार socially, educationally and economically backward. तीनटा criteria होचे. अरे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब तो नोटिफाई तो होचे ना प्रेसिडेंट नोटिफाई करछि शेड्यूल कास्ट बोली शेड्यूल ट्राइब ओबीसी हवा पई तमरो तीनटा क्राइटेरिया दरकार गोटा हला इकोनॉमिकली बैकवर्ड हवा दरकार सोशली बैकवर्ड हवा दरकार आ एजुकेशनल बैकवर्ड दरकार तीनटा कथा ए जिंसटा 15/4 रे नेहरू सो इन चंपकम जो तमिलनाडु गवर्नमेंट provided reservation for scheduled caste, scheduled tribe and OBC in medical colleges and engineering colleges. This was challenged in the Supreme Court. This was challenged in the Supreme Court and Supreme Court clarified जे तमे educational institution रे reservation रखी परिबनी if that institution is run by the government. Please note down. If the institution is run by what? By the government, not private sector. If it is a government engineering college, if it is a government medical college, then you cannot have reservation for anybody. समस्त इक्वल एक्सेस होबे से को आर्टिकल अछि सेटा कहलो से के सर जो मते कहउतले बर्तन ते कोन से आर्टिकल ता थिला व्हाट इज द आर्टिकल को देखु तो केमते तमे 16 आर्टिकल 16 नो ठीक भाभी को देखु तो केमते माने बुमरा यार कर केमते नहीं आर्टिकल 46 रे नो को प्लीज लिसन टू माय क्वेश्चन. Which article says? Sir, Amendment 102. No, तब एक बार में जाऊँ. Co article of the Indian Constitution says that there cannot be any discrimination in matters of educational institution if the institution is government funded. Have you understood the question? 29 Article 29. What? Also, on 3-2, lekha 29-2. What is also the 25 was religious 29-2. 29-2. Article 29 says that if it is a government institution, if it's a government education institution, karan samaste paisa douchanti, so there cannot be reservation for anyone. Right to equality asibo. Hala to? Right to equality ko dauchi 14 re. Are right to equality ketala asibo? Je samaste ame tax douche, tala how can I reserve somebody for scheduled caste, scheduled tribe? Are बुझी पड़छो कि नहीं? Yes, sir. Sir, kahe ki tahle why Madras government did that? So they said, please note down, Madras government kale ame promote करूछु Article 46 को. Please write down. अरे तमिलनाडु गवर्नमेंट रिजर्वेशन दला तार एक बेसिस तो थिबो ना. What is the basis? Article 46. Article 46 कोड होची making, please note down, special provision, please note, making special provision for socially and educationally backward classes, including SC and ST. Is that clear to all of you? Clear है 46 टा कोड आउची डायरेक्टिव प्रिंसिपल ना फंडामेंटल राइट आउची डायरेक्टिव प्रिंसिपल. BBSR. सो तमिलनाडु गवर्नमेंट कहला जे आमे ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टा को by this we are following the directive principles. Directive principles कहूची the state should make special provisions for those who are socially and educationally backward. So for promoting 46, we are violating 29(2). Please note down. For promoting 46, please note down. अरे तुम जो कोर्ट रे केस करछो तो पागल की से कहबे काहे कि करले आपण मु जे गवर्नमेंट वकील है मु कभी सर हमर 46 अछि सुप्रीम कोर्ट रे हमर संविधान रे अछि बुझी पड़छो तो 46 संविधान रे अछि जे आमे स्टेट रो काम हला टू प्रमोट
the educational interest of backward classes. Are you all following me or not? बुझुछ कि नहीं? तो भलो केते बुझ ताले डेप्थ आसीबो हैला. So 46 एटा करछि. So सेति पय जदि 29(2) जेटा फंडामेंटल राइट सेटा को हमें पार करछु. ए जिंसटा को एक्सेप्ट करनी चंपकम दोरायराजन केस. प्लीज नोट डाउन. चंपकम दोरायराजन कहला जे फंडामेंटल राइट्स will supersede directive principles. Please note down. चंपकम दोरायराजन बुझि पड़छ. चंपकम दोरायराजन रे सुप्रीम कोर्ट कहला जे फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल. प्लीज नोट डाउन. कि जल्दी करो, हाथ हला जल्दी. फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल. Directive principles are not justiciable. जदि तमरो राइट टू इक्वालिटी के नेला तमे जेकरी ओडिसा हाई कोर्ट रे पार्टी करिवो. तमे तो झियोटे तमे डिस्क्रिमिनेट मु कली तमे ए कहबो से जो सार थे बुढ़ा सार थिले से बता डिस्क्रिमिनेट करले मत नोट देलेनी मोडे अनेलेनी. सो आर्टिकल 14 इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेट करले. आर्टिकल 15 से कहबो डिस्क्रिमिनेट सर करले मते हला. सो आर यू ऑल फॉलोइंग मी और नॉट? तो क्लियरली बुझो कि नहीं? सो तेणु सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नेहरू बाबू कहले नेहरू सेठो अंबेडकर संग कथार्थ कले. अंबेडकर कहले ठीक अछि गोटे काम करंतु आपण एमति गोटे नुवा दैट वाज अंबेडकर्स डूइंग. दिस वाज नॉट डन बाय नेहरू. ही वाज लॉ मिनिस्टर ऑफ नेहरू. आमे सब गोटे पार्टीतुल करछे नेहरूटा बाजेटा आमे करछे किंतु किछि बुझु नै करना से कोन करथला केते बुद्धिया लोक से बुद्धिया लोक सब लड़े होतला. गध मान को लड़े होनतला जेंति पार्लियामेंट चलछि. It was a fight between intellectual titans. Are you all getting me? The people of exceptional merit. तांकर जुक्ति तर्कड़ा देखला बेले पार्लियामेंट्री डिबेटड़ा देखला बेले मु लेखे because I know how right they are. Are you all following me? So सेइतरे कहला माने बाउंसो थिले सरा बाउंसो बाजिबो सरा ना थिबो बाउंसो ना बाजिबो बाउंसी. से कहला सेइति पे 15(4) was introduced. Have you understood? So please write down. Article 15(4) was introduced. Article 14 was introduced in the first amendment so that directive principles are not thwarted. Thwarted means checked. Thwarted by fundamental. Con Article 15? Article 15 so that directive principle. Con directive principle है promotion of socially and educationally backward classes. ताको यदि promotion न दबो ताको यदि reservation न पढ़ियो किमती. ताको यदि तमे बही फ्री न करिवो ते पढ़ियो किमती. अरे बुझो कि नहीं से जो हरिजन वस्तु आसी पढ़ियो केम से. So सेइते पई 46 will prevail over so 46 will prevail over 29(2). Many people say Champakam Dorayajan case is a bad case. It was not a bad case. The court was looking at the constitution as it was. There was no 15(4). अरे बुझो कि नहीं? So please note down. Eight a challenge hela. It like 15(4) hela that was challenged in the Supreme Court. Seita ko Sankari Prasad case re. Please note down. Sankari Prasad case re. In 1952, the Supreme Court said it is okay. तेणु एमाने जो मोदी सर जो कहले जे सर बहुत बदमाशी कले किछि बदमाशी करना किछि बदमाशी करना तमे तो रिजर्वेशन करू समस्त रिजर्वेशन करूचंती. अरे गटी में पॉइंट. So they were barking up the wrong tree. Are you getting me? It was a very wrong statement by the Prime Minister because this was the first seedling for reservation in education. Are you getting me? This is the first seedling. बुझ पड़छो कि नहीं? ए जो रिजर्वेशन जो चार्टा 15(4) रे करा गला. काहे करा गला? जे हमें सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इज मोर इंपोर्टेंट देन फंडामेंटल राइट्स. कौन तर मूल मतलब सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इज मोर इंपोर्टेंट देन व्हाट? फंडामेंटल राइट्स. 15 रो काम हला एजुकेशन, 16 रो काम हला एम्प्लॉयमेंट. तुम मिसाने तक तमे जो 15(4) 16(4) जो बाया भला कहूछ नो 15 इज फॉर एजुकेशन, 16 हला फॉर एम्प्लॉयमेंट. तमे तड़ा
संविधान टा पढ़ुच सेटा पागल भाया पढ़नी बुझल कि खाली रोटिकी पढ़नी ताको बुझी पड़छ ना सो सेई थरे सो फर्स्ट कथा हला दे एडेड 15(4) इज दैट क्लियर सेकंड एडिशन हला प्लीज नोट डाउन सेकंड एडिशन हला आर्टिकल 19(2) 19(2) टा कोन को सब ऑनलाइन 19(2) टा कोन 19(2) टा कोन Association, sir. No. Freedom of speech. So many more restrictions were introduced. Please note down, many more restrictions were introduced to freedom of speech and expression. Have you understood? अरे फर्स्ट अमेंडमेंट अरे बुझी चुकी नहीं फर्स्ट अमेंडमेंट रे प्रथम हला 15(4) सेकंड टा कोन हला 19(2) जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन से जो चारिटा थला सेथरा तीनटा बढ़िला मोर गोटे स्टूडेंट प्रत्युष महापात्र जो ओपीएस रे फर्स्ट हला 5 years बैक इंजीनियर टे ताकू पचारले इंटरव्यू रे जे फर्स्ट अमेंडमेंट रे कोन इंपोर्टेंट फीचर्स हेतला से कहिदला संख्या 19(2) सेला रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कोन कोन सब ऐड करथले से तीनटा कहिदला ओपीएस रे फर्स्ट क्लास हैव यू अंडरस्टूड नाउ हाउ यू वर्क ओवर अदर्स अरे बुझ के नहीं कथाटा हां ठीक है डेफ्ट सो दैट वाज द सेकंड थर्ड आला लेखो 31A was added 1 minute 4 हला 31B was added please note down 31A was added agru 31 थिला राइट टू प्रॉपर्टी थिला right to private property हला आर्टिकल 31 कौन थिला right to private property was a fundamental right नेहरू सेतरे ऐड कले आर्टिकल 31A तबने सेतरे कले estates that government can acquire estates धर हमर दीपक टा बहुत धनी लोक तार बहुत बड़ा टी एस्टेट अछि तर हम ता टी एस्टेट न बहुत चाहू छी सो estates from private property the scope was extended to what estate बुझ कथा प्लीज नोट डाउन तापर हला he added article 31B article 31B रे ए जो शेड्यूल 9 टा से क्रिएट कले किए क्रिएट कले शेड्यूल 9 टा क्रिएट कले एटा गोटे बुद्धिर काम आ पाजिर काम भी से कहले एमिति गोटे शेड्यूल तयारी करो जो थिरे के जुडिशियरी आसिकरी ता ऊपर जेमते गौन करे बुझलो तो सो लेट अस हैव अ शेड्यूल वेयर देयर विल बी नो जुडिशियल रिव्यू हैव यू अंडरस्टूड को एक्ट रखो चाहे ऑल लैंड एक्विजिशन एक्ट्स सबु जतले हमर सेतबेले गवर्नमेंट रो पॉलिसी थिला जमींदारी एबोलिशन प्लीज नोट ऑन जमींदारी एबोलिशन बहुत जमींदार पर बहुत जमीन थिला हमर जिन 150 एकड़ जमीन थिला बुढ़ा देखला को 62 रे मो नोना देखला को 120 एकड़ चली गणी को बुझो तो कथा आमे देखला को 30 एकड़ अछि 150 आमे कहले कुआड गल नोना सब चले गल रे जमीन तो हरामी अछि नेहरू सब पैसा नै गला हमर सब जगुड़ा नै गला कोन किछि बुझो कि सो जमींदारी जो एबोलिशन हला तारे बुझो कि नै पैसा थिले तो चली जीव तो जानिबो तमे कोन होउछि बोली हला that was 31B have you understood what is 31B a new schedule was created called schedule 9 सेतबेले schedule 9 रे सब लैंड एक्विजिशन एक्ट्स रोतला बिहार रे यूपी रे बहुत लोगों पर जमी थला ओडिसा फुडिसा हेतल रहथला दंकिया दुर्भिक्षा लोक सब थिले बहुत तक जमी भूमि थला बिहार रे सो से कहला ए जो लैंड आ नबा आर यू ऑल गेट मी सो दैट शुड नॉट बी disputed in the court so कौन चट्टा amendment हला tell me now 15(4) yes article 19 to expand हला scope 31A आउ तापर हला 31B हमें सेही थ्रू सार देचंती जे सार हमर देचंती प्रश्न देचंती ए 9 शेड्यूल ऊपर माने एते बड़ कथा कहि कि सार सेटू कोन कले से 9 शेड्यूल प्रथमे करो तो 9 शेड्यूल बुझिया पई
तुमको फर्स्ट अमेंडमेंट टा बुझियो पड़ियो आर यू ऑल क्लियर अबाउट इट और नॉट पूरा क्लियर हला कि नहीं अरे क्लियर हला कि नहीं यू आर नाउ क्लियर अबाउट द होल थिंग तमे भाबुचो सला ए Yes, sir. पद्मटा तो अछि पद्म तो हलुची हां को अरे आर यू फॉलोइंग मी नाउ so please remember when a question comes tome class 1 officer habo please remember there's a lot of competition so if you have this depth तमे सबो जगह रे जो जीता वो सिकंदर जो फर्स्ट अमेंडमेंट पूरा समझ गया वो सिकंदर है ताको अटकेबो के नांती have you understood so now let us understand this question so कोन कहितली right to property article 31 सेटा हला acquisition of private property please note down first article जो 31 हला please note down इटा right to private property थला सेटा रे दीटा मेन डिस्प्यूट है प्लीज नोट डाउन 50 जजमेंट जाने गोटा हला गोलकनाथ रे प्लीज नोट डाउन गोलकनाथ रे आ गोटा हला केशवानंद भारती रे आर्टिकल 31 रे दीटा इंपोर्टेंट जजमेंट है कौन इंपोर्टेंट जजमेंट गोटा हला गोलकनाथ 67 रे आ गोटा हला केशवानंद भारती 1973 गोलकनाथ रे सुप्रीम कोर्ट कहला जे फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे सीधा कथा हमें आउट डेप्थ रे जिबारी नल आंसर कर परिबानी गोलकनाथ केस रे सुप्रीम कोर्ट कहला फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी टच्ड आर यू ऑल गेटिंग मी फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी टच्ड केशवानंद भारती केस रे कहला दे कैन बी टच्ड सिथर जस्टिस खन्ना प्लीज नोट डाउन हंसराज खन्ना जी को बहुत जज बिल कहले से स्पेसिफिकली कहले राइट टू प्रॉपर्टी कैन बी टेकन अवे माने यू कैन अमेंड राइट टू प्रॉपर्टी आर यू ऑल गेटिंग मी तमे धर लिखिबो जे जस्टिस खन्ना केवल से अन्य केही लिखि नांती in the judgment only justice Hansraj Khanna has said that right to property can be amended no other judge actually has given that kind of a clear view they have said fundamental rights can be taken away hati fan ta doke kana you isita are buji porto katha na so eita thala tomra article se article ta kon hala now that article 31 tomra udi gala there is no article 31 now से article 31 टा वर्तमान गोटा ऑर्डिनरी राइट हे गला कोन हला 300 ए हे गला प्लीज नोट डाउन 31 टा वर्तमान 300 ए हला इन 1978 इन उत्पुरुष 1950 मसिया रो टिल 1978 मसिया पर्यंत ए आर्टिकल 31 ऊपर सुप्रीम कोर्ट रे ऑलमोस्ट 80% केसेस है जमीरी पे 80% केसेस वेर ऑन आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी अरे बहुत धनी लोग अछंती तंगर पैसा अछि माने केस कले ओडिसा तुम देखो ओडिसा हाई कोर्ट रे देखियो सब 50 टा लोग बोलुथवे केस करी आसीबे तू मामू को अजन देखि अरे तानारे केस कर दीची माने जहां को देखियो सब प्रॉपर्टी केस चली बंगाली मान को देखो खाली केस चली तारीख पे तारीख जो कौन गोटे सिनेमा नहीं तारीख पे तारीख जो सनी देओल करूदा सो तारीख पे तारीख से कहला 1970 प्लीज नोट 1978 रे आर्टिकल 31 हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स इट इज नाउ एन ऑर्डिनरी राइट किंतु 31 ए आ 31 बी एबे भी अछि तो जो कहउछे राइट टू प्रॉपर्टी चली गला नाही राइट टू प्रॉपर्टी जाईनी राइट टू प्रॉपर्टी जो एस्टेट एबे भी अच्छी गवर्नमेंट रो कोन बुझो तो आउ एटा अच्छी एबे भी 31 बी अच्छी आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग क्लियरली 31 ऑलरेडी कहि छरची 31 बी कहि छी सो 31 प्लीज नोट डाउन आई एम नाउ वी आर कमिंग टू आंसर द क्वेश्चन 31 बी रे कोन होची एक्ट्स एंड रेगुलेशन प्लीज नोट डाउन एक्ट्स एंड रेगुलेशन इन शेड्यूल 9 are immune from inconsistency with part 3 jaha act say schedule 9 रे रहिबो if there is a conflict with fundamental rights so they will not be struck down have you understood जदि कोन बुझि पड़छ कि नहीं ए जो शेड्यूल 9 ता तैयारी कराला जेटा को मैं ब्लैक होल बोली कहूचे से ब्लैक होल रे जहा रूल्स एक्ट्स रहिबो यदि से एक्ट गुड़ा फंडामेंटल राइट संगे डिफरेंट आसीबो ताहले दे विल नॉट बी स्ट्रक डाउन
Are you all getting me? So that is what he was criticizing. She was saying that here is the government which made right to property beyond judiciary. But they are not really respectful towards the judiciary. If they are saying that they cannot be subjected to judicial review, then what respect do they have for a judiciary? Judiciary काम कौन? Judge करिवो जेटा constitutionally inconsistent होची कि नहीं मिली तमे ताको उड़े देलो ताको. So judicial review, so ये जो कथाटा सार पचारचंती judicial review कथा पचारचंती, से judicial review is a part of the basic structure. Please note down, judicial review is part of the basic structure. जोटा पचारचंती basic structure पहले कौन जी सबुटो maximum कहबो ताको 100 टका देबो. आमे basic structure कौन कौन आसुची मते तो को बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन होची को गोटे गोटे को पछुर को तमे फेडरलिज्म ओके तापर को Judicial तापर review. को हां Judicial review. तापर separation of powers, supremacy of the constitution, सेपरेशन ऑफ पावर आओ Parliamentary system. सेक्युलरिज्म कोई सलानी सेक्युलरिज्म आओ Secularism. आओ को Rule of law. Parliamentary system. रूल ऑफ लॉ बढ़िया आओ को Supremacy of constitution. supremacy of constitution has not been said as a rule of law is basically supremacy of the constitution. Said nahi mane basic structure nahi semti specific judiciary, Parliamentary judiciary. asigala tomara eithre judicial review re asigala judicial review and independence of the judiciary dita misi karo judicial review au independence of judiciary au ko Parliamentary system. Republican and democratic system. kon gala Parliamentary system, sir. free and fair elections je kahi chi ta gote tali mara free and fair elections au Welfare state. kon democracy kahi chi Welfare state. unity and integrity asuni setre au ko constitutionalism, Democracy. parliamentary form au constitutionalism, parliamentary form तो सब बहुत एते पंडित हले केम हबो डेमोक्रेसी freedom and Sir, dignity welfare of state. individual. नाही सर उडा कोन गालुआ कथा कहले केम हबो सर वेलफेयर स्टेट कोठी आनिमा से ठीक Powers of Secularism, constitutionalism, these are not basic तो मैं मने मने सब जति जज हबो आउ कैसे क्वाड जीवो से हंसरस खाना क्वाड जीवोडा सब Dignity of reads हां Article 20, 26 अरे and सुनो 32. तबे एत्ती की मन रखो प्लीज एत्ती की मन रखो प्रथमे तमे पीएम उल्टा को देखो प्लीज नोट डाउन Harmony and balance between fundamental right and DPSP. Mineral mills case. तमे तमे खाली मन रे तमे गडी करी लिखियो आंसर करिवो जी खाता तमे देखियो कहबो खाली गोटे कंफ्यूज माइंड पुरिया मान मुंडटा प्रथमे ओपन करो कॉन्स्टिट्यूशन रे पीएम उल्टा गो करो वी सेठु आरंभ हला तमरा बेसिक स्ट्रक्चर सेठु आरंभ हला कोन हला वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिजर्व कोन टू सॉवरेन सोशलिस्ट को मारो छक्को मारो प्लीज छक्को मारो socialism the court has not said so far that it is a basic structure please note down socialism is not a basic structure Sovereign democratic republic. sovereign democrat very good sovereign democratic republic ऑटि कहि सरची sovereign तुम बुझि परछो त केमिति तमे एबे खाली घोषि करी मन रखनी चाहा तमे Secularism, sir. सर कहि सरची मोटी कहि सरची सर कहि सरची एठी आमे सिस्टमैटिकली जीवा किम सिस्टमैटिकली जीवा प्रथमे जीवा आमे कोठी की प्रीएम्बल को जीवा प्रीएम्बल रे कोन देखले आमे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एथे कोड संधा नहीं सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एथे कोन से डाउट अछि की तापरे सेक्युलरिज्म से डाउट नहीं Sir, independence of judiciary. सेटा पहिल प्राय जो केते सर मैडम कहिबी जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी Freedom and dignity of individual. हां Freedom and dignity of individual. कोनटा कहलो Freedom and dignity of individual.
jehetu but she is not answering incorrectly. Please note down, there are 3 articles which are also considered part of the basic structure. Jodi kiye kahi do ko there are 3 Sir, Article 32. Yes, Article 32. 226 sir. 32 226 ठीक अछि. Very good. हाँ, very good. 226 Very good. Out tinta. 226 Article 20. 136, 227 141 and 14, 19, 20. अरे ठीक है. 14, 19 and 21. Please note down. A 14, 19 and 21 को कहूचा में golden triangle of fundamental rights. तो question आसिकला सार देई नहंती. What is called golden triangle of fundamental rights? How has the Supreme Court looked at it? पूरा गिल्ली पूरा उड़ी गला तो से सार केवल जानते 14, 19, 21 सार से कागज तक उठे हुए. Have you noticed? If a question comes, the 14, 19 and 21 are golden triangle of basic structure. Please explain why and how the Supreme Court looked at it. बुझो तो तेणु आमे कौन सी आर्टिकल घोषिक मन रखिबानी आमे सो प्रियम्बल कौन नेले आमे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेले सोशलिज्म ता नेले नहीं सेक्युलरिज्म ता नेले से वर्ड रे जो ऐड हेतला 42nd अमेंडमेंट रे. सो 42nd अमेंडमेंट रे जो ऐड हेतला socialism and secularism. Please remember, only secularism is considered to be a basic structure. को जजमेंट रे जदी कहि दबो तको वो 500 टका दे देबे. एसआर बोमाई केस. अरे ताली पर सर नाही सी सर मत 500 नहीं थंदे एसआर बोमा. अरे सर थाला वो 500 नहीं थंदे रे आज मोर जाइतला पैसा. एसआर गिव हर ए बिग हैंड. एसआर बोमाई केस. very good answer. Excellent answer. ए झियोटा गोटे कोन तुम ना कोन कहले मा पार्वती मारंडी. हां पार्वती तमे बहुत आगे अछ. बहुत भलो. Very good answer. Say judgment रे not in case of the Bharati case. Please remember, it is only in SR Bomai case Supreme Court has said secularism. तो आईएएस परीक्षा दो चकी इंटरव्यू आउछ बुझलो तो सेठी एई होया सब तुमको पचारि तमे घोषिक जाइछो सेक्युलरिज्म कोठ हेइतला को जजमेंट रे से पार्वती कहि रे. अच्छा अच्छा. Have you understood केमते 4 रु मीटर तक केमते 8 होची देखुछो तो तब सो 4 ही मीटर अच्छा 4 3 4 3 ता भीतर किछि किछि 6 ही जाउची किंतु 8 हवा पई एतिके डेप्थ. अरे बुझी पड़छ नै म कथा कौन कौन हला सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेक्युलरिज्म तापरे फेडरलिज्म तापरे जुडिशियल रिव्यू रूल ऑफ लॉ फ्री एंड फेयर इलेक्शन parliamentary form. Please note on parliamentary form. Now many people are saying that we should have presidential form of government. This is again a question, Deepak, which has come. Should India go for a presidential form of government? Are you getting my point? Man, there is a debate in this country which was raised by Shashi Tharoor. Shashi Tharoor was the person who said India should have a presidential form of government. So somebody said already Modi to president ache to prime minister kon kuchu. So already president bela se achi se Trump type dada bela achi kon besta kya kuchu. Kuchu ta anyway. So but we are a parliamentary form of government. Is that clear to all of you? Is that clear to all of you? So these are our basic structure. Hello. So basic structure cannot be violated, and but acts violating. So it is 73 re tum tikki rahi tha. Now a jo controversy schedule 9 rahla, please note down. बर्तन आमे आसीबा बुझी पड़छो कथाडा बुझी पड़छो कि नहीं. अरे डेप्थ आछी कि नहीं तमरो ना सब जानि थलो सब जानि थलो सब नहीं कि मु खाली गोटे पागल बेले हाले कहूची नहीं कि सब जानि थलो कि डेप्थ आसले जाइन करी तमरो आंसर ता रिच हबो. So please note down in the Kesavananda Bharati case, they said that schedule 9, if it is
affecting basic structure, please note, if it is affecting basic structure, then it would be invalid. Amar kon question ta kon hochi judicial review of 9th schedule. Eta Coelho re arambh hoini, eta arambh hoichi Kesavananda Bharati. बुझी पड़छ तो कथा किमिति आंसर ता 8 को आछी देखछ तो. So the genesis of this whole thing was 1973. Have you understood clearly? Have you understood clearly, Rosalind? In the Kesavananda Bharati case, the Supreme Court said that if any act which you are including in Schedule 3 is affecting basic structure, then it will be invalid. Schedule 9 re, Schedule 9 कौन थिला? Schedule 9 re any act will not be subject to judicial review. Sen कहले नहीं, it can be subject to judicial review जदि से act is in violation of basic structure. Is that clear? एमिति नहीं जे basic structure violate कले भी सेटा सीधे Schedule 9 रे रहइबो. बुझि पड़छ तो कथा. Is that clear to all of you? तापरे असला, please note down. Woman Rao case re, I'll just complete this one question so that na. So reinforce जो कहले सार जो लेक्चर में reinforcement रा आरंभ हला केशवानंद भारती केस. केशवानंद भारती केस रे Supreme Court कहला जे if any act included in Schedule 9 is violative of basic structure, it can be struck down. बुझि पड़छ? समस्ते भावंती, there is a general misconception the Schedule 9 re only land acquisition act actually. No, there are a few acts apart from so in 31B there is nothing, it doesn't say only land acquisition act, any act. Please remember, 31B does not say land acquisition acts, it says any acts. So the general wrong impression achi is kebala land acquisition act guda ka achi. No, predominantly there are land acquisition acts, but there are also other acts, and there are some acts which have been struck down. Are you getting my point? Because they are violating basic structure. I'm thinking that. So first was 73. Tapare Woman Rao case re lekho 1980 re semane कहले जे any amendment after 24/4/73, 24 April 1973 re Kesavananda Bharati case judgment thila. The Kesavananda Rao Bharati judgment was up to 24th, delivered on 24th April 1973. So Woman Rao case re semane कहले जे if any act is there before 24th April 1973, they will not be reviewed again. We will not see uda ghanti bani au suda ghanti bani jaha ye kono कारण basic structure doctrine dhala 73 re na teno ame au ta purbu ku jibani, and that position has been accepted. Ta pare please note down Minerva Mills case re kon issue hoitila. Minerva Mills case re Supreme Court again said judicial review is a basic structure. एटा को अमेंडमेंट को रेस्पोंड करथला मते कहि परियो के सर 42 अमेंडमेंट 42 अब 42nd अमेंडमेंट कौन थिला? बहुत बढ़िया. 42nd अमेंडमेंट कौन थिला? कोनटा कोटा को सर कहले देखा कहलो बहुत बढ़िया आंसर कहलो को 42nd अमेंडमेंट रे कोनटा थिला जोटा को मिनर्वा मिल्स केस रे ताकू पिटला को. सर पार्लियामेंट इंक्रीज द अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368 रो and parliament the Supreme Court कहला कि जो मिनिमल पावर restricted power है parliament is extending that power. ठीक है, प्लीज नोट डाउन. तो ठीक कहछ तो लिखो 42nd अमेंडमेंट रे डेटा एडिशन हला 368 रे. What is 368? Power to amend the constitution. Mrs. Gandhi in 1976 added 2 articles. कौन आर्टिकल ऐड कले? 368(4) and 368(5). तुम मैंने सब टिके जानिच किंतु तुमर गोटे थॉरनेस टा नाही. थॉरनेस जति हे जीवो तुमरो मीटर टा पूरा 8 रे चलियो.
Are you all getting me? एमिति कथा नाही जे तमे जानू ना हाथी बोली किंतु हाथी दांतटा को कहउछ नाही सर जीव भले लागु सर हमकू ता कानटा सर ता पाद भले लागु ए भले टिके असुविधा होतो बरा आउ किछि नै बुझु तो कथा अरे हाथी दांतटा दांत बुझले कि से दीटा क्लॉज को लगैतला कोन क्लॉज लगैतला 368(4) and 368(5). प्लीज नोट डाउन 368(4) कहला Supreme Court doesn't have the power of judicial review. 368(4) कहला जे judicial review power नहीं जदि से amendment आमे कलु if I make an amendment to the constitution they do not have the power of judicial review. Is it clear? 368(5) कहला जे parliament has full powers to amend. Please note down जो कथा 1971 रे कहितले को 1971 रे इंदिरा गांधी कहितले 24th amendment रे 24th amendment रे 1971 मसिया रे ए कथा इंदिरा गांधी कहितले जे आई कैन अमेंड एनीथिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काहे केमते कहउतले से कने मो लोकंकर वोट पाइची एडा की मते चेकमेट करिया पे these are unelected fellows. I am the elected empress of India. मु बांग्लादेश को माने पाकिस्तान को हरे गिरी बांग्लादेश को नुआ देश कर दिली एडा की मते बदमाशी कर मो से कथा हे बुझु तो कथा ताको अटल बिहारी वाजपेयी कहला दुर्गा माँ बोली कहला अरे ऑल गेटिंग मी से कहला मु तो दुर्गा माँ ये की सुप्रीम कोर्ट कहू चिंत कथा किंतु ताको सला बजेले केशवानंद भारती 70 प्लीज रिमेंबर if you want to hear the story गोटे कथा सुप्रीम कोर्ट माने जे पार्लियामेंट करूची ताको सुप्रीम कोर्ट टिके चेका दोची ताको भीतर गोटे अहिनकल संपर्क चलछि एमती नाही जे मोदी घरे जाके से जाके गणेश पूजा समस्त करछथि सुप्रीम कोर्ट रो केबे पड़ेनी सुप्रीम कोर्ट रो केबे पड़ेनी गवर्नमेंट संगे से गोटे पट अनै थी ये गोटे पट अनै थी बुझले कि सो 71 रे इंदिरा गांधी कहला जे मु सब कथा अमेंड कर परिबी एंड you cannot review my action. That was based on a notion that parliament is supreme. Please note down, parliament is supreme. Parliament is sovereign. जो बारंबार कहते तो parliament constitutional supremacy. So court कला मैडम अपना supreme हुहंती संविधान supreme. Please note down. से जो constitutionalism तुम जो बारंबार बाया भला कहूचो constitutionalism is supreme. Parliament is not supreme. अरे पार्लियामेंट इज ए क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काले यदि कॉन्स्टिट्यूशन कहबो जे सुप्रीम पार्लियामेंट नहीं तबे नहीं अरे काले यदि पार्लियामेंट कहबो राज्यसभा नहीं जो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन कहबो जे राज्यसभा नहीं तो नहीं अरे आर यू फॉलोइंग मी और नॉट सो कहना तबे बयान कोन मैडम अरे यू आर ए क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ कैन यू अमेंड एवरीथिंग You can amend. Yes, you have the power of the people. You have the voice of the people. किंतु तमे यदि भाबो जे मु सब कर देबी से हेई परिबो सेति पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी गोटे कोनले कि सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इट्स अ गुड थिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी सो ए कथा रे पूरी से 76 रे कहिने 71 रे माड की दला को 73 माड खाइला पूथरे केशवानंद भारती केस रे 71 रे जो 24th अमेंडमेंट हला तो की माड दला केशवानंद भारती माड़ दला 73 रे 73 माड़ खाइला परे मिसेस गांधी 1966 मसिया रे पुणी सुप्रीम कोर्ट को कहला जे 368(4) and 5 रखिबी सेटा को मिनर्वा मिल्स केस रे 1980 मसिया रे सुप्रीम कोर्ट कहला नाही मैडम आपन कहितल 73 रे मैडम आपन कहितली बारंबार कहली जे आपन पूरा सुप्रीम नहंती आपन सम्राज्ञी नहंती सम्राट होचंदी संविधान सम्राट के संविधान आउ जुडिशियल रिव्यू नाई आमे जते अनइलेक्टेड हो जा हो हमको संविधान पावर को देइची अपन ठीक करछन कि भूल करछन हैव यू अंडरस्टूड प्लीज राइट वन लाइन सो मिनर्वा मिल्स केस प्लीज नोट डाउन is the last straw in the camel's back. Last straw in the camel's back. Ita thara astila. Minerva Mills case is the last straw
in the camel's back. What do you understand? Camel's back रे इटा final छुरी उठा जो इंदिरा गांधी जो camel तातरे final छुरी हला it is the last straw in the camel's back. एटा कहतले नानी पालकी वाला India रो one of the greatest lawyers कहतला जे Minerva Mills case judgment is the last nail in the coffin of Mrs. Gandhi. It is also the last straw in the camel's back. बुझी पड़छो तो? Have you understood the debates or not? तो जो सार कहउचंती जे जुडिशियल रिव्यू कथा कहउचंती बेसिक स्ट्रक्चर बुझी गरा में कौन कौन हम प्रथम पॉइंट सो रखथिले कहो कौन कौन पॉइंट रखथिले क्वेश्चन रे ना प्रथम कौन पॉइंट रखथिले जुडिशियल रिव्यू रखथिले बेसिक स्ट्रक्चर रखथिले आ कौन रखथिले रीइंफोर्सिंग रे कौन हला रीइंफोर्स किन थला 73 रे जो कथा कहैतला सेटा 1980 मसिया सेटा को रीइंफोर्स हला आर यू ऑल गेटिंग मी तापर फाइनली इन आयर केलो केस प्लस आयर केलो केस रे again Supreme Court reiterated the contention of Woman Rao. बुझा गला पूरा क्वेश्चन देखो तने बुझा गला नी आमे एटा को वर्तन आंसर करिया लेखा तुमे तो so now let us now see judicial review of 9th schedule. Judicial review किछि हेछि कि the question is in two parts. तेनो प्रथमे हम बुझी गले प्रथमे कोन बुझले जे 9th schedule was introduced briefly कहि दो 9th schedule was introduced by article 31B in the first amendment. In 1973 the Supreme Court said that 9th schedule, if any act is violative of the basic structure, then it would be struck down. 1973. This position was repeated in 1980 in IRLO case, in 2007, in Woman Rao's case in 1980, and by IRO case in 2007. The Supreme Court has also asserted that judicial review remains a basic structure. Clear hala? आमे बर्तन सेकंड पार्ट को आसीबा सो फर्स्ट हला तार समरी हला नो ब्लैंकेट इम्यूनिटी कोन हला नो ब्लैंकेट इम्यूनिटी टू एक्ट्स अंडर शेड्यूल 9 शेड्यूल 9 दे सेटा एक्ट अछि बोली देयर इज नो ब्लैंकेट इम्यूनिटी बुझबो तो पूरा ताको छाड़ नै सेकंड हला अमेंडमेंट गुड सो देयर वाज वन एक्ट नाउ आई एम गिविंग एन एग्जांपल एथरे तमे 8 रु 9 मार्क पाइबो ए गुड एग्जांपल देले तमे जाकी पाइबो 8 रु 9 मार्क पाइबो सर जो आंसर दै छथि ताको 8 रु ए जो आंसर तो मु आंसर ऐड करूची सेही थरे जानि देबे जे देखियो तो खाता जे सा बहुत अछि बहुत पानी भीतर अछि प्लीज नोट डाउन जे 39th amendment रे प्लीज नोट 39th amendment in 1975 39th amendment in 1978 39th amendment in 39th amendment etla kebe 1975 re 1975 re 39th amendment etla कहउछ this is called the famous Indira Gandhi case. Please note down Indira Gandhi case. जेतले मिसेस इंदिरा गांधी रायबरेली जो इलेक्शन हेतला तंग इलेक्शन ता it was struck down. So say to जेतले तंग election was set aside, so she introduced the 39th amendment. Now in the 39th amendment se je election of the prime minister cannot be subject to judicial review. Please note down 39th amendment कौन थिला president और prime minister रा election are not subject to judicial review. Prime minister and president, vice president और prime minister तीनटा लोगों करो president, vice president और prime minister करो president, vice president एटा होची this will be not subject to judicial review.
So they made an act, Representation of People's Act. Section 8A semane introduce kale. Please note down. So they introduced an amendment. Amar jo Representation of People Act achi, jo thara me elections are the principles of election, basic principles of elections achi. Sei thare semane Section 8A kale. Jo thare semane kale je Prime Minister election is immune to judicial review. This was struck down by the Supreme Court. Judicial 9 schedule thila. They also struck down Article 324A Constitution. That was also struck down because it was against the principle of rule of equality, rule of law. You cannot have double standard for the Prime Minister and a normal MP. See, MP hala, Prime Minister hala, saman. Are you all getting me? Have you understood? So one of the acts which was struck down in 9th schedule, the question is which act was struck down? So this is one of the acts. Have you understood now the depth? ताहले जाइकरी तमे तमर आंसर जानिबो से बहुत गभीर अछि से जो दि तीनटा मार्क तमे अधिक ना कोन कहजो से जो दि तीनटा मार्क तमे अधिक पाइबो सेई थरे तमे पोजीशन तो बस तापर होची बुझी पड़छो तो सो कोर्ट से थरे कहला नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय 31B दैट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू रहइबो तापर ऑल आर्टिकल्स अंडर पार्ट 3 कैन नॉट बी ट्राइफल्ड विथ तापर समय से कहले 21 14 19 cannot be extinguished. Please note down. Schedule 9 रे तमे 19 14 और 21 किछि अफेक्ट करी किछि एक्ट कलो that will be struck down. Please note down. 21 14 19 जदि सेही तरह तमे किछि एक्ट कलो कहबे नै that is not subject to judicial review ताहाले that will also be struck down हैला. So therefore, eti khali ko. So Bartwan Sudha 284 achi and a few has been struck down. Reservation in promotion quota in education, that has also been struck down. Tome ete depth no jai ki tome khali mon rakho it is not achieved that every provision in schedule 9 will not be subject to judicial review. Judicial review habo, and if it offends, so now let us have a model answer. Let me dictate a model answer. तारे तमे से अनुसार करियो. हेलो लेखो. In the first amendment to the Indian Constitution in 1951, Article 31B was introduced as per which any act included in Schedule 9 will not be subject to judicial review. Full stop. In 1973, in the case one of the Bharati case, the Supreme Court clarified that all acts in Schedule 9 are not immune from judicial review. Full stop. In 1980, in the Vaman Rao case, the Supreme Court clarified that any act promulgated after 24th April
1973 can be reviewed to find out if they are offending the basic structure doctrine which was basic structure doctrine which was propounded in the iconic 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 Keswananda Bharati judgment, which was propounded in the Keswananda Bharati judgment. Full stop. Finally, in the IR Coelho judgment in 2007, the Supreme Court reinforced the stand it took in Vaman Rao case. Para. There are 284 acts which are part of Schedule 9. Full stop. It would be interesting to note that a few provisions like immunity to the Prime Minister from judicial review, from judicial review in electoral dispute was struck down. Full stop. The Supreme Court, as the custodian of the Constitution, has thus asserted supremacy of the Constitution, importance of basic structure, and the fundamental tenet of judicial review, which was also clarified in the Minerva Mills case 1980. That's all. Give this answer, you'll get 9 out of 10. केम लागला आंसर ता केम लागला टिके पढिला टिके केम लागला एटा आंसर ता हबो कि 9 मार्क मिलियो कि ना मिलियोनी हां होची ना नहीं सर पसंद आया क्या मोगाम्बो खुश हुआ सो मोगाम्बो खुश होगा नहीं ओटा जमेकरी सर लिखि छी तेडो एटा को तमे रहिले सेमति कगिरी आ गोटा में आ गोटे इशू बुझबा लेट विल गो टू सर देखाउ तो क्वेश्चन देखाउ तो बुझो कथा अरे बुझुचो कि नाही पिरा माने तू भीतर को चली गले कि मुंडा बथौछ कि टिके केते तक इंटरेस्टिंगली कहौ तो इंटरेस्टिंग लागुनी ता लागुनी हां इट्स रियली इंटरेस्टिंग इट्स रियली इट्स फैसिनेटिंग तापरे हां आमे 12 को जिबा 12 नंबर क्वेश्चन को जिबा सर अपन तो खुशी तो हां ठीक है तो एमिति हेले जाइकरी कहार दम नहीं तुमको आईएस अटकिया पे काम्या मिश्रा फास्ट हेतला बुझले कि फास्ट हेतला कोठो दिल्ली यूनिवर्सिटी को पढ़तला एलएसआर रे भारी सुंदरी भारी गर्वी भारी बुद्धय से आसिकरी मो पाखरे पहुंचला कहला सर मु आईएस दोची देबी आउ टिके आपनटू
इकोनॉमिक्स पढ़े मुझे तो पॉलिटिकल स्टूडेंट गोटे क्वेश्चन टे आंसर टे करो लिखरी आनो मु ता गोटे क्वेश्चन देरी जे लास्ट ए जो कैमल्स बैक बोल तो देली से खाली तारा झाड़ बाहरला से मु कहली कामे एटा इंग्लिश लिखुचो कि एटा पॉलिटिकल साइंस लिखुचो तो कांदिला से मु कहली एमते कांदिले कोन हबो मां कांदिले हबोनी 21 वर्ष रे सी गॉट आईपीएस हैव यू अंडरस्टूड तो दी मास से जो रहिला मो पाखरे रगड़ी गिरी एकदम सब तो ए जो थॉरनेस पाई आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग इट हैज टेकन मी 5 years when I became a teacher in the law school I was teaching constitutional law मु एलएलबी नो कि एलएलएम नो एलएलएम पिलां को मु संविधान ता पढ़ाए और सर बहुत जी हावा मारचंती किछि हावा मारनी तुमको सत कथा कहूची एलएलएम पिलां को मु संविधान पढ़ाए तारो मंजी जे पर्यंत न जाई unless you go to the roots you will not get good answers समते भावंती अरे कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी सो इजी कौन से तो किछि इजी नो एमती सब पॉसिबल तो तब 3-4 मार्क पाइजो किंतु बट इफ यू आर अगेन एज आई स्टार्टेड इफ यू आर लुकिंग फॉर 7-8 ना कौन कोचो इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड आंसर्स गुड मार्क्स तो करिया अच्छा छोटा आंसर कर तो पाइ माने यू डोंट हैव टू वेरी जे मुसा दिटा क्वेश्चन करि पाले नो I have told my students if you can do 6 questions out of 10 questions if you can do 6 questions and score about 7 each of them you are through baki na tikit to karibo are you all getting me that should be your strategy should not be to be a mediocre fellow in all the questions you should be outstanding in a few questions and answer normally in the others say jo outstanding level pai mu tam man pakhe se परिश्रम रे पढौछि सर सर तो जोड़ा कले खाली गोटे क्वेश्चन कले सर जो क्वेश्चन रे कले माने जुडिशियल रिव्यू करे यूपीएससी में बहुत गुडे क्वेश्चन पड़े सब आठ कटियो तेणु सर जोड़ा कले एटा तो गोटे मॉडल आंसर किंतु जुडिशियल रिव्यू करे 10-12 क्वेश्चन पड़छि एनी क्वेश्चन हम तो खाली आईआर केएलओ को केस कले फर्स्ट अमेंडमेंट जो ऊपर हम पढ़ितला तापर केशवानंद भारती केस ऊपर भी क्वेश्चन पढ़ितला तो सब माने जो जितने भी क्वेश्चन अछि सबुतिर डिटेल जो एक्सप्लेनेशन का जो कांसेप्ट हम तो खाली पढ़ी की कोशिश की लिखि दउ कि एई केस कि एईटा जो सर पूरा क्रोनोलॉजिकली केमति नेले तो सेईटा गोटे थर जो ये वीडियो तुम देखिछ रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर हाउ किंबा जहां भी जुडिशियल रिव्यू करे एनी क्वेश्चन पढिबो तुम आंसर कर माय तुमको अनुरोध मोर रहला तमे जुडिशियल लेवल रे जहा क्वेश्चंस आछि 10-12 क्वेश्चन आछि तमे गोटे जगह रे कर दियो करिकरी व्हाट आई विल डू तुमको गोटे सेई थ्रू गोटे कंबाइंड क्वेश्चन दे देबी माने जो थरे एकदम पूरा जबे की डेप्थ अच्छा अनेक गोटे क्वेश्चन रिपीट होछि देयर सम स्टैंडर्ड क्वेश्चन दर गोटे क्वेश्चन ला हाउ इज फंडामेंटल राइट्स सुपीरियर टू डू यू कंसीडर फंडामेंटल राइट्स टू बी सुपीरियर टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मैंने आईएएस रे बहुत राची एफआर इज सुपीरियर टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लॉ क्वेश्चंस आर देयर नाउ मेनी पीपल थिंक बुझले कि मेनी पीपल थिंक जे कोनटा अछि फंडामेंटल राइट अब कर दवा यू जस्ट गेट 2 to 3 मार्क्स प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन इज फंडामेंटल राइट सुपीरियर टू डायरेक्टिव लिखो इटा तो लिखि के बता आंसर पठाओ इज fundamental right superior to directive principles please bring out the contending the contending arguments please bring out the contending arguments for and against this statement. First. Arguments for and against. 8 गोटे starting from inventing basic structures, the judiciary has played a highly proactive role in ensuring that India develops into a thriving democracy. In the light, evaluate the road present judicial activism in achieving ideals of
डेमोक्रेसी एथर प्लीज नोट करो जुडिशियल एक्टिविज्म गोटे टर्म रहला जहां तो पढ़ेली से खाली एक्टिविज्म प्लीज नोट डाउन जुडिशियल एक्टिविज्म कथाटा से आसला हाँ सुप्रीम कोर्ट कीप्स आर्बिट्रेरी चेक ऑन पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस क्रिटिकली ठीक है देखो तो लेख एडको तुम लेख तुम लेख आज रात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स ए चेक ऑन आर्बिट्रेरी पावर ऑफ पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस क्रिटिकली लेख एडको वेरी गुड क्वेश्चन कहीं की आर्बिट्रेरी कहउचंती कहीं के आर्बिट्रेरी कहउचंती मिसेस गांधी कहला जे मु तो लोक मते वोट देले अरे लोक मते वोट देले मु तो प्रधानमंत्री हेली मते किया कहीं के आर्बिट्रेरी हला कैन समबडी आंसर मी व्हाई इट इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी चेक कोन हला because they are trying to amend and defile the constitution please note down because they are defiling the constitution to samane defile kurchunti because they are not amending they are defiling the constitution they are taking out its core character jemti ghare the foundation achi are foundation to bhangi dabo to upare AC lagi rahi paribo that is arbitrary. Please remember, today, even if the BJP gets all the 544 seats, they still cannot make India into a theocratic state. It cannot make India into a Hindu state because of the basic structure doctrine. Are you getting my point? Are you all getting me? Even if the party in power gets 544 seats, कई नांती ना सोनिया गांधी अच्छी ना कई अच्छी तेबे भी इट इज आर्बिट्रेरी बिकॉज कहीं के हला आर्बिट्रेरी कारण हमर जो फाउंडिंग फादर माने तर हमर भारत हला सेते बड तकर बेसिक आइडिया थिला जे आमे गोटे धर्म निरपेक्ष देश पाकिस्तान रो रहिला जे आमे धर्म निरपेक्ष नु आमे हो मुसलमान इस्लामिक स्टेट दिस इज द फंडामेंटल वैल्यू Are you all getting it? So तमे पॉलिटिकल पावर पाइले भी हाँ तब दिखाओ चलो देखो क्रिटिकली कुछ बोल critically examine the court's judgment in the NJSC Appointments Commission Act with reference to the appointment of judges. এটা নোট করো তো ଗୋଟେ କାମ କର ଯେତେ ଗୋଟେ ଜୁଡିସିଆରୀ ଅଛି ଗୋଟେ bunch together कर दियो ଶୁଣ what you do is you bunch them together and send it to me खाली कर दे दियो ताहले एमानु कोन करबी बुझले तो ए क्वेश्चन रो डेप्थ थोड़ा करो जोटा तुमको डेप्थ डिफिकल्ट लागुछ मत कह माने आमे करबा खाली आर यू ऑल गेटिंग मी बुझी पड़छ तो मैडम होछ ना नहीं ठीक है तो आमे जमा डरिबार नहीं किछि एमिति क्वेश्चन नाही जोटा कि तुमको चनाचुर बादाम बड़ा खाई परियोनी तुम खाली से टर्म्स हो दरकार जेंति इकोनॉमिक्स तो कांसेप्ट थोड़ा को ए कांसेप्ट कोन असला जुडिशियल रिव्यू असला बेसिक स्ट्रक्चर असला जुडिशियल एक्टिविज्म आछि एउडा को सब गालवा कथा नु हो एउडा कर गोटे टर्म अछि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म माने कोन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कोन मते आज मोर गोटे सांग रमेश मिश्र फोन करी कहू जे आस्त्रा कहला भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कोन रे से हो जे सारा पॉलिटिकल से फर्स्ट क्लास फर्स्ट आस्तला मोर जन्मदिन को आस्तला मते आज फोन कहला कोन भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तू कहूचो मु किछि कोन ता माने कोन नॉर्दर से बुझी परनी ता माने तार तथ्यटा कोन अरे मोरालिटी कोन तथ्यटा कोन खाली मोरालिटी कोन सेटा सो ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी देखो पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिमिटेड पावर एटा किए कहि देला तो कहि दो तो माने बहुत बढ़िया लागियो माने किए कहि देला स्वरंत भारती तो सरा से महंत लोगटा कि रे जज कहि देला ए कथाटा गोटे जज होची कृष्णा आयरविल कहि देला ए डोनी कैन नॉट बी ए डोनर प्लीज नोट डाउन ए डोनी कैन नॉट बी ए डोनर डोनरटा किए संविधान डोनी किए हला पार्लियामेंट सो ए डोनी कैन नॉट बी ए डोनर केते सुंदर सब क्वेश्चन अछि
Parliament's power is a limited power and it cannot be enlarged into absolute power. ठीक है ना? In light of the statement, please explain whether the Parliament under Article 360 of the Constitution can destroy the basic structure. Sir, को judgment asla इतरे? को judgment asla? मु कही बिंटा जी कहियो. All of you please see, Parliament's power to amend the Constitution is a limited power. It cannot be enlarged into absolute power. In light of the statement, explain whether Parliament under Article 360 of the Constitution can destroy the basic structure of the Constitution by expanding its. Who judgment इतरा असला? Minerva. Very good. So please break this into three parts. Part करो. एक question का part करो. कौन से कहते तुमको प्रथम क्वेश्चन ऑफ पार्ट करो. फर्स्ट करो, पावर ऑफ पार्लियामेंट इज लिमिटेड. तो 10 मार्क तुम्हें आंसर करिवो. सुना, तमें जदि जोटा आंसर करिवो प्रथम क्वेश्चन देखो पार्ट भाबे करिवो. सब पार्ट रे तुमको मार्क दे. तुम्हें बालू बालू है कि लिखले हबनी. तो फर्स्ट कथा लिखो, पार्लियामेंट power of parliament is limited. It is the first part. ताले सेटा absolute एजा आसीगला सदरे आसीगला. अरे बुझ कि नहीं? अरे first part बुझले कि नहीं? Parliament's power is limited. Number 1. Number 2 हला, Parliament cannot destroy basic structure. Parliament cannot destroy basic structure. It is second part. This question has two parts. कौन हला? The प्रथम हला Parliament. को judgment है हला? अभी प्रथम part आंसर करिया. तो करो तो प्रथम first part आंसर करिया. ये first की कहला इटा को judgment है हला. उटा बॉस शूट करेगी. को तो बहुत सिंपल कथा. केशवानंद भारती केस रे. अरे केशवानंद भारती केस रे कहला तमे रूट को जाओ ना कहीं को केस रे कहला जे पार्लियामेंट पावर इज लिमिटेड. केशवानंद भारती. अरे ऑल गेटिंग से कहला तब पावर टा एब्सोल्यूट नुह एंड दैट वाज रिइटरेटेड इन मिनर्वा मिल्स. फर्स्ट पार्ट आंसर करो. देखो तबे आंसर ता एमिते न करिवो तबे से चारि पाई चली आसीबो. वेरी सिंपल क्वेश्चन. कौन आंसर करछे? पार्लियामेंट्स पावर इज लिमिटेड. को जजमेंट रे कथा आसला भारती तापरे मिनर्वा मिल्स केस रे आसला. सेही तरह तुम गोटे लाइन लिख देबो, ए डोनी कैनॉट बी ए डोनर. डोनी कैनॉट बी ए डोनर सेड जस्टिस कृष्णाया. ए क्रिएचर कैनॉट क्रिएट. ए क्रिएचर कैनॉट क्रिएट ए कॉन्स्टिट्यूशन. लिखिले तुम आंसर से जानीदेव जी सर बहुत भल गोटे पढ़ी. बुझीपार तो ए क्रिएचर कैनॉट क्रिएट ए कॉन्स्टिट्यूशन. सो दैट इज हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. फर्स्ट पार्ट आंसर हो. अरे तुम बेसी तो 228 वर्ड रे आंसर कर. फर्स्ट पार्ट केशवानंद भारती कहले, तापरे मिनर्वा मिल्स कहले, तापरे हमें कहले जे क्रिएचर कैनॉट create, it cannot change the अच्छा तापर असले से फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट कौन हला जे it cannot destroy the basic structure of the constitution. एठी तमे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दा सेकंड पार्ट ऑफ द असले एटा तमे काली आंसर करी म देखियो पठेबो हला. ऑल ऑफ यू लिसन टू तमटे को ताको सम तो को जे एटा ओटा तमे आंसर करिवे माने सो दैट आई अंडरस्टैंड वेदर दे आर अंडरस्टैंडिंग मी और नॉट. फर्स्ट पार्ट आंसर हे गला. मु पूरा आंसर डाकुडी प्रोफोन डाकी देथिली. सेकंड पार्ट हला जे whether the parliament under article 368 can destroy basic structure. Please note करो प्रथम है ना तबे explain करियो what is 368. Please note down. Article 368 is the power to amend the constitution. से थे तबे explain करो 368 रे that some articles can be amended. Please note down. Some articles can be amended through 2/3 majority in both houses. And some require ratification by more than half of the states. तो 368 गोटे नुह खाली अमेंडमेंट नुह
किछि आर्टिकल अछि जोडा करे 2/3 मेजॉरिटी हेले अमेंड हेगला किंतु ता छडा अनेक गुडे आर्टिकल अछि जो थरे कि the states have to also ratify. In the one nation, one election, please note down, one nation, one election, it will require approval by 2/3 of both the houses and both the by 50% states. Hey, 360 to explain color, that is amendment. Then you come. Okay, that's what. I'll call you back. So then we will say, hello, amendment, hello, second part, hello. तो सबू कही दूची खाली तो लेखिक गुंती के तो करिवो तुमको सबू फुलोड़ा दे दूची खाली गोटे हार करिया कथा बुझছো तो तापर हमें 368 परे तापर करिवा जे in the 42nd amendment हैला 42nd amendment two clauses were added to article 368. Two new clauses were added to article 368 4, which took away the power of judicial review. No, पूरा कही दूँ तुम किसी लिखी बने तो took away power of judicial review. And 365(8)(5) said that Parliament is supreme in amending the Constitution. हैला तापरे मिनरवा मिल्स केस रे कौन हैला तमे लिखि दबो तापर कंक्लूडिंग लाइन रे लिखिवो जे since 1980, please note since 1980 all political parties irrespective of their ideology accept the concept of basic structure and judicial review. जो फार्मर स्ट्राइक करू जो हंगर स्ट्राइक सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कहला जहां सुप्रीम कोर्ट कहबो आमे सेटा मानिबो अयोध्या केस रे कोन हला पार्लियामेंट कहला जहां सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देला आमे सेटा मानिबो. So judicial review is acceptable to all parties. Are you all getting me? आज बीजेपी आसु कि कांग्रेस आसु so say through jana purchi je how India last likho this shows that India keeps in healthy democratic tradition. Aim the answer hele tomar answer ta 8 asibo khali tame likho it was struck down in minimum case 1980 court said no taap likho je whether it is the Congress government or the non-Congress government thereafter all parties of different ideologies are accepting that judicial review is important. They will accept judicial review and they also accept that constitution is supreme. Constitution is supreme. Basic structure doctrine have to be accepted. So therefore the health of India's democracy is very robust. Aim the answer kole तुमको कहीं अटकेबार प्रश्न उठुनी ना तुम डू एग्री विथ मी और नॉट अरे बुच्ची कथा नहीं तुम एमती आंसर कले 200-250 वर्ड करा तो आ एमती खाली बाण भला मार दे से हा इंग्लिश लिखले होबनी ना देखिबे कोन तुम ठोस लिखछ कोन आज जुग रे आम समय रे भलो इंग्लिश लिखि कि आमे आ अधिया मार रखथु फिजिक्स प्ला ए जो साइंस प्ला जो इंजीनियर प्ला होतेले ताको अधिया मार रखथु इंग्लिश भलो लिखे नॉट नाउ पूरा इंजीनियर्स माने साइंस पिला माने सब हमको लड्डू करछुछ हम कान काट दोछते आम बेले बाणी बिहार रे पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स इंग्लिश हिस्ट्री समस्ते जियो तंको लाइन करथले पिला भलो पिला कने एगो सब पाइबे आईपीएस फेमस पाइबे सो फिजिक्स पिला पाउथले आ बाकी सब साइकोलॉजी सोशियोलॉजी किए तकर ना गंध नाही बट नॉट नाउ हार्डली 5-6 पिला इकोनॉमिक्स से पाउथले एक्चुअली आउट ना सब आजकल इंजीनियरिंग पिला किंतु इंजीनियर पिला बहुत भलो बुझंती. I want to tell you because I teach different students. I find students of science and engineering take a little time in art subjects. ठीक है अधिक समय लगे ये जो पारलाइट भले
किंतु थोड़े से बुझी गले से मैंने आहुरी बढ़िया बुझ भला My own experience has been most of my students who have made it to the civil services are good engineers. बढ़िया बुझे टाइम टी लगे किंतु बढ़िया बुझे से कॉमर्स सब बुझी परियो सने सब डेप्थ रहो हमर जो ढीला आज के लेले पॉलिसी सो एटा हला आ गोटे कर दो टिके जुडिशियल रिफॉर्म ता केते समालानी आ गोटे बुझी पड़छो तो बडे काम करिवो टिके जत्ते जुडिशियरी ऊपर जत्ते क्वेश्चन अछि तमे बंच टुगेदर करी गिरी समस्त को गोटे गोटे क्वेश्चन सेना करंतु सेना कॉलेज जाई गिरी एडा सब हबो सो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन टुडे केत समालानी हां ठीक है आ गोटे क्वेश्चन करा आउट माने एथरा को ताको टिके भलो करी लाइन आसी गले त मुटे लाइन रहले तापर दौड़ियो सब हां दौड़ियो कि नाही दो हां अच्छा सब रिलेटेड क्वेश्चन जो कथा से कहले दिस इज प्रिसाइजली द हेल्प दैट आई नीड फ्रॉम हिम कौन कथा बोले तो मु गोटे काम करथि सब रखते 10टा खंड वर्ष क्वेश्चन रखि ता संगे करथि माने व्हाट आई यूज्ड टू डू जोटा सब मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दे के पिला को करथि किंतु एटा बहुत बढ़िया हला तबे एटा जो करछो से बहुत बढ़िया हला मते टिके सब माने दर प्रीएम्बल हला फंडामेंटल राइट हला हम गोटे काम करा फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल सब क्वेश्चन बंच कर दियो जुडिशियरी रा क्वेश्चन गोटे बंच कर दियो एई गुडा को मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल रे समस्त भावंती हमें बहुत विद्वान बोली माने एमिति न झुंटेबो क्वेश्चन रे तमे भाबी परियो एमिति न झुंटेबो क्वेश्चन आइस रे तो आप विश्वास करियो तो सेउडा बाहरी जोटा सब मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हबो आ गोटे तो बहुत छोटे गोटे ए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिजर्वेशन अछि केबे क्लास एटा 2019 give me a big hand हां कते 103 कौन से एटा काहे की चैलेंज हला सुप्रीम कोर्ट रे को सो इट वाज एक्सीडिंग बहुत बढ़िया था गोटे ताली मारा टिके ताको ताली मारा दो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सो इट वाज एक्सीडिंग 50% लिमिट के रखितला को केस को जजमेंट रहितला इंदिरा स्वानी जजमेंट इंदिरा स्वानी देखो तो केमती अटैक होची से पटू गोटे पटू स्टार गोटे पटे कमिंस तुम सारा अनेबार समय ने मुतिया पे टाइम नथु बुझल के तो तला इंदिरा स्वानी जजमेंट कहा ऊपर थिला साटे कहले टिके इंदिरा Reservation and public employment. For whom? For economic weakers. No. OBC. OBC. Mandal commission was accepted. So that was देखो तो किंदी तबे टिके थरो रुओ बहुत बढ़िया अछि बहुत बढ़िया very good. So सार कहले जे सेटा 50% रो अधिक हला बोली सेटा सुप्रीम कोर्ट चैलेंज हला. Was that the case or something else? बुझी पड़छ कथा ना इंदिरा साहनी केस रे कहला जे 50% रिजर्वेशन तमे अधिक जीवनी जेतेबेले 103 रे सेने कहले जे एटा आउ 10% बढ़ियो बोली so that was challenge it was not challenged on that ground it was challenged as offend please note it was challenged as offending basic structure question asibo 103 amendment on EWS was challenged on the basis of offending basic structure केमती माड़ खाइले देखो तो have you understood now so it was challenged as violating the basic structure ठीक है कहलो काहे की से काहे की बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट कला बोली से कहउतले कोन पे वायलेट कला बोली कहउतले को कि भाबो किछ असुविधा नै एनीथिंग काहे की बेसिक स्ट्रक्चर सेटा वायलेट करा को भाबी तो को किछ असुविधा नै अरे have you understood the question or not IAS rate reservation cannot be given in the economic basis. Give him a big hand. Constitution रे कौन सी प्रोविजन नहीं
जे इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को रिजर्वेशन जोटा से मते टॉपिक कहितला सोशली एंड एजुकेशन करतला सेटा होची एकदम करेक्ट से कहितला प्लीज नोट डाउन reservation so far has been on the basis of a caste, please note down, caste, education and social backwardness. So far जितने रिजर्वेशन होतला को बेसिस होतला शेड्यूल कास्ट हिच कि शेड्यूल ट्राइब हिच कि ओबीसी हिच कास्ट एजुकेशन आउ एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस हैला एथरे फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर गिविंग रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन इट हला फर्स्ट चैलेंज सेकंड चैलेंज हला जदि तमे इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस को करूछ से माने कहा को देले 10% टू ओनली जनरल कैटेगरी प्लीज नोट डाउन कहा को देले ए जो 10% कहा को देले जनरल कैटेगरी को not to everybody एई जदि एई कथाटा जदि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस तो तमे क्राइटेरिया नलो जे जहारा इनकम 7 लाख रु कम पर ईयर प्लीज नोट डाउन 7 लाख is the basis for economic backwardness 7 लाख 60,000 per month पर 7 लाख जे तमर अछि से मतलब इकोनॉमिक लेस अछि ताले तबे इकोनॉमिकली बैकवर्ड अछि बुझो तो सो एटा द क्राइटेरिया होची ताले it should apply to all castes किंतु कहा को सेवन करचंदी केवल करचंदी जनरल कैटेगरी have you understood मोदी देखला बाकी समस्त को तो दिया जाउची लडू कहा को रसगोल्ला कहा को जलेबी दिया जाउची अरे ये जनरल कैटेगरी को नियारे मुतुचन ना कोन so this is the benefit he has given to general category are you got my point but in the process it is affecting the principle of equality please note down ते भले कि बुझियो चेष्टा कर आमे जदि कहूचे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बेसिस रे आमे रिजर्वेशन दबा ते नथिंग रॉन्ग जेदी गरीब अछि आमे ताको गोटे गरीब पॉवर्टी लाइन हला जिंदा हम बीपीएल कार्ड दोचे so on the basis of income we are giving reservation. So the contention before the Supreme Court was that why is it not being extended to all? समस्त को दियो जो से ब्राह्मण हो कि शेड्यूल कास्ट हो कि मुस्लिम हो irrespective of caste, religion and social caste. एथरे सुप्रीम कोर्ट रा डिसीजन थिला जे फर्स्ट पार्ट इज इट इज नॉट ऑफेंडिंग बेसिक स्ट्रक्चर प्लीज नोट डाउन फर्स्ट सेकंड रे देयर वाज अ डिसेंटिंग ओपिनियन ऑन द सेकंड इश्यू नागारत्ना गोटे जस्टिस थिला जस्टिस नागारत्ना प्लीज नोट डाउन नागारत्ना से हबो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस हबो आउ 6-7 मास पर मोदी रो प्राण खाइबो से सब महा माने चंडी नंबर 1 सब बेले से दउची डिसेंटिंग जजमेंट दउची समते जहा कहबे तार से अलग कथा कहती से कहला इट इज वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ए कथा अन्य के कहना चंद्रचूड़ के कहना समस्त मानले ठीक अछि इट इज नॉट ऑफेंडिंग से कहला आउ गोटे ठीक अछि इट इज अनदर वे ऑफ गिविंग प्रोटेक्शन टू poor people in the general category जिमती शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को पे कास्ट देले ओबीसी को देले एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस रे सो वी आर नाउ गिविंग ऑन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आउट अ क्राइटेरिया हला आर यू ऑल फॉलोइंग मी गोटे हला कास्ट बेसिस रे दोचे गोटे हला सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड दोचे आ गोटे इनकम रे दोचे सो इट इज नॉट ऑफेंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर वो गलत ऑब्जेक्शन लगा दिए किंतु सेकंड ऑब्जेक्शन जो हला सेटा बुझि पड़तो कथा तो एम जदि क्वेश्चन आसी बुझि पड़तो दीपक एम जदि क्वेश्चन आसला ताहले जो आईएएस लेवल एवं क्वेश्चन भी आसी आईएएस रे क्वेश्चन आसी बुझि पड़तो तो ताहले तमे जे आंसर कर दलो बाकी से थ्रू 99% पिला एथरे मार खाइ जिवे ए क्वेश्चन रे तमे यदि से 1% आसी आंसर कर दलो आर यू ऑल गेटिंग मी गोटे हला बेटर आंसर देन अदर्स प्लीज रिमेंबर दिस विल आंसर दिस गोटे हला बेटर आंसर देन अदर्स द सेकंड इज questions which others cannot answer please remember जोटा तमे केही करि पर नहति बहुत कम लोक इधर सपोज दिस इज वन क्वेश्चन लाइक दैट अधा आसीबो
से जेमती कहि देला जे 50% अधिक आला सर कहि देले किंतु दैट इज नॉट द आंसर कोर्ट डिड नॉट से जे 50% एक्सीड करियो बोली in that judgment they have not said this so चुप रहले से कथा please remember they did not say that you cannot exceed 50% तो कहते नहीं मौन सम्मति लक्षणम से चुपचाप रहले are you all following me अपन जो कथा कहले जे 50 सु एक्सीड करा so court didn't say anything on that court only said जे economic backwardness it can also please note down economic backwardness can be a criteria for reservation are you all getting me and it is not offending the basic structure. It has a main judgment. Just as you have caste as a justification, just as you have education and social backwardness as justification, you can have income also as a justification. So this is what, so this is not offending the basic structure. Are you getting my point? So तमे एगुडा टिके देखि देले एटा आंसर कर दो हां दियो एटा तो कर दो सेकंड आंसर कर बुझी पले पिले माने सब आमे से जुडिशियरी बर्तमान देखिया जुडिशियल रिफॉर्म को जीवा टी इजियर हबो तुमको 10 मिनिट एटा हमें कंप्लीट कर देबा बुझी पड़छो तो कथा अरे बहुत कथा तुमको कुहा गलानी बहुत लडू हेइ सलानी रात रे बसी के तोटी भाबियो बसी गिरी हला भाबी गिरी तको हां नेक्स्ट चलो हां जुडिशियल रिफॉर्म आमे आसीबा बर्तमान जुडिशियरी ऊपर में आसीबा हां this will be another very important एथरे जो हमर दीपक सर गोटे आंसर दैछथि ताको आउट के डेप्थ हमको नबा पड़िबो we have to have a greater depth in this question कारण एटा गोटे समस्ते माने जो आंसर करिवे मैक्सिमम लोग जो आंसर करिवे से 3-4 पाइबे बलबल हबो कोन बलबल हबे कहबे जे बहुत एरिया अछि लॉट ऑफ एरिया बैकलॉग बहुत अछि टाइम लागुची समस्या कहबे बुझो तो कथा अरे जुडिशियल रिफॉर्म रे कोन तमे कहबा जे बहुत वैकेंसी अछि सर बहुत टाइम नउचंती ह आउ जहार धनी लोग सेही जस्टिस पाउची एम खाली ଗୋଟେ କଥା कहबा आबे अरे बहुत टाइम नउचंती बहुत बैकलॉग होची सला बहुत खर्च होची सलमान खान रात रे खसी जाउची सला बाकी लोग पाउ नांती ह अर्णव गोस्वामी बेल पाई जाउची बाकी उडा सब मुसलमान हेकरी भितर पछंती एउडा सब जुडिशियल रिफॉर्म एउडा का सब 2 मार्क 3 मार्क भले आंसर सब नाउ लेट अस अप्रोच दिस क्वेश्चन ऑन अ वेरी इंटेलिजेंट वे मु आज बसी काली रात से बसी तो पईटा आंसर करछि बुझले की माने सार जेतळे बॉलटा मते देले मु ताकू राती जाका बसी लागि छी 4 घंटा 5 घंटा लागुची तम मन को करिकरी कोडा लडू भले तम पाठरे दवा पे लागुची तो बुझबो ना बुझी परिबो ना बर्तन देखो प्लीज नोट डाउन गोटे जुडिशियरी प्लीज नोट डाउन जुडिशियरी रे गोटे हॉलमार्क हला गोटे गुड जुडिशियरी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड जुडिशियरी प्लीज नोट डाउन हमें रिफॉर्म पूर्वरु फर्स्ट लिखा हमें जे व्हाट आर द प्राइम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम जुडिशियरी प्लीज नोट डाउन व्हाट आर द प्राइम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ जुडिशियरी एटा को फर्स्ट बुझलो तो फर्स्ट व्हाट आर द प्राइम एक्सपेक्टेशन गोटे लोग कोन भाबुची मु जुडिशियरी गले प्रथम हला फर्स्ट लेखो एक्सेस इक्वल एक्सेस प्लीज नोट डाउन फर्स्ट कला इक्वल एक्सेस मु गरीब हो धनी हो मु कोर्ट को जाई परिबे को आर्टिकल रे एटा एन्श्योर्ड हेची हां 39A please give her a big hand 39A very good 39A so this is so universal access has been ensured through 39A एटा केबे हला रे केबे 42nd Amendment Act 1976 बहुत बढ़िया 76 रे एटा हला इक्वल एक्सेस हला इक्वल एक्सेस माने कोन से एक्सेस पाई गला जो तमे लोकल पाखु जीवो तार कोन स्टैंडर्ड टा कहलो मते कहला horrible illegal under NALSA quality is not good mane you get an access to a lawyer kintu you don't get an effective access please note down access katha hochi society asla issue asla effectiveness please note down so not only access is it efficient and effective please note down
access sangre एटा efficient और effective हला की खाली access हले नहीं. Is that fellow capable of arguing against Kapil Sibal? Kapil Sibal तो खाई जीवो सर को एकदम पूरा खाई जीवो. सर से कोर्ट थीबो तारा लाइट नथिबो तारा लैपटॉप काम करूनी. से कौन ता सामने तो खाई जीवो तो बुझलो त गरीब लोग खाई जीवो ताको. Please remember, मुक तुम कहीं के तुम मजाक को in the US, please note down, in the US, every bright lawyer takes up these cases pro bono, PROBONO. Pro bono mane on your own. Pro bono, PROBONO. जो तबे तले लॉ प्रैक्टिस करू जो सर पचारिबे जे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रो बोनो केसेस यू हैव तमने केते तमे गरीब लोकंगो केस नहीं छ. So the best lawyers in the US, as a matter of routine, about 30% cases are pro bono niyanti. So it's a matter of prestige for them. जे हमें pro bono केस नहीं करी हमें जीते छु. आमर एठी सारा सब पैसा खाइबा चक्कर. ए दि चारटा अछंती वकील अछंती. मु थरी आसला इंदिरा जयसिंह आसला ताको पचारली मु कहली मैडम हाउ मेनी प्रो बोनो केसेस हैव यू टेकन? यू आर ओनली championing cases of drunkards, alcoholics, murderers. How many have you taken poor pro bono cases? Se pura in the US they value taking pro bono cases because it's a matter of prestige for them. The best lawyers पर चने पैसा तो पाइबे किंतु किछि तो सोशल कमिटमेंट रहइबो. अरे गरीब पे किछि तो कमिटमेंट रहइबो. That commitment is conspicuously absent in India. खाली पैसा कमेबा. So please note down first access, effectiveness. Access, access. Timeliness. कितने टाइमली होची 10 वर्ष परे होची कि 15 वर्ष परे होची कि मु मला परे मो पुआटा होची बुझले कि सोडो मजा होची. मोर गोटे ऊपर गोटे सांग थिला he was overlooked for promotion. Se case kala Arunabh, so his son gave me a ring. Kala uncle happy birthday. Mukili are happy birthday. Setu mukili to kim achu. Kala dad own the case, but you know he is up in heavens, and I will only get the money. So I say Odisha 85 मसरे केस करथिला 2024 से तारा गला परे चिता गला परे ता पुओ ताको एबे बर्तन तार को तो से पाइबो 5 लाख 10 लाख पाइबो. ए होची जस्टिस बुझो तो timeliness. So that also is a very so one of the major requirements for an effective judicial system is whether it is timely. बुझो तो थर्ड कथा हला please note down quality. Many times we forget this dimension. अरे भलो जज जदि हबो ताले क्वालिटी ऑफ जजमेंट भलो हबो. नहले जो बढ़िया बढ़िया सब लॉयर अछंती तुमको खाई जिबे सेंती से. अरे सो जते बळे इंडिया इंडिपेंडेंट हला हमरो मिस्टर शीतलबद वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल. मोतीलाल शीतलबद ही वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल. तांको नेहरू पचारले what is the quality you are looking for as a judge in the Supreme Court? See, Nehru independence independent from judiciary, from executive. He said no competence. He said, please look for people who are competent because they will have to hear very, very bright lawyers. Whether you are competent enough to understand. So quality is very important. Quality of judgment. Quality of judgment. So people question the quality of judgment. जेतबेले ये चंद्रचूड कहले जे मते भगवान कहले मु एंते मंदिरटा कली से कहले क्वालिटी ऑफ कोन ये भगवान कहिर ता ऊपर कोन जजमेंट दबो. Are you giving judgment on the basis of evidence or on the basis of faith? What is the issue there? Evidence पे कलो ना faith रे कलो किछि evidence नहीं. अरे बुझो नहीं. So therefore are you getting so quality of judgment is also very important. आउट कथा लेखो domain expertise is very, very important. But judiciary
there are three types of cases. Please note down. There are three types of cases. Gotala civil case. Civil case re asla tomra land dispute asla, tax dispute asla, property disputes asla. There are civil cases. Then criminal cases. IPC, CRPC. Third hala constitutional cases. Constitutional cases. Human rights issues. So, आमे भाबुचे जे जे जज होचे हाई कोर्ट रे सुप्रीम कोर्ट से सबु जानि थिवो से ता जीवन रे केबे टैक्स प्रैक्टिस करिनी से केमती टैक्स पर जजमेंट हो so in the US please remember in the US when they advertise for Supreme Court or High Court their Supreme Court they look for judges with domain expertise so this is one major reform that we require माने आमे तले जज नउचे ए जो गोटा जनरल एक्सपर्टीज है कि सब कथा से सुनिम से कहबो चिकन टाई भलो हिची सन्तुला टाई भलो हिची सिम्पल हबनी अरे बुझु कथा माने टैक्स इशू हिची very serious tax issues are there so many people say many judgments of Supreme Court do not stand scrutiny on the tax issues buझु तो So domain expertise is very important. Please note down. So one of the reforms that we are looking at is the domain expertise. Now quality, please note down. Quality, one of the issues, jota ki Deepak lekhini, which is Indian Judicial Service. Please note down. Indian Judicial Service. This proposal was mooted. The Indian Judicial Service, the IAS hochi, semane decisions have High Court judge have, Supreme Court judge have, tagar quality nischa bhalo. Jinde OCS hochi. Are you all getting me? So, eita hamar quality bahut improve karibo. Kintu emane jo bara achandi buda hada chadu nanchila. Are you all getting me? So, quality is very important. I mean, all said and done, whether you like it or not, in the IAS, it still attracts the best of talents. So, gota bodhiya budhiya loko hele, se kothara buji paribo. से जानी परिबो जिनसटा कोन कहूछ मो सबले से कथा कहे सबले जे whenever I talk to people आम मानकर what is the difference between us and academicians lawyers and doctors कहबो से बलबल बाजे कथा कहबो a bureaucrat will understand it immediately जे कोन तमे कहूछ and he also will have a solution जे इटा करो Our mind is trained to do that. So therefore, once you have very competent people, the mind works very clearly. Are you getting my point? The country still runs because of very, very bright civil servants that we have. Mantri kichi koru nahanti. Tanka tole jo joint secretary achindi seura subu no track koruchନ୍ତି. Manmohan Singh ko jo bahut jo tekate koruchନ୍ତି sabu reform jo 64 page Singh avile type kortila apna. Entire thing was typed by him. He gave the idea, but it was done by Mantek Singh Ahluwalia. Are you all getting me? So say thre tomar domain expertise darkar. Khali kahi dela habani. Are you all following me? So तुम गोटे जजमेंट लिखुछ जजमेंट पे गोटे तोरा चंद्रचूड़ कहीं एते लोक प्रशंसा करथिले he used to write exceptionally good judgments but by his own admission he had no idea about tax matters. He was a constitutional law expert. किछि असुविधा नहीं माने एते किछि कमी नहीं से द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रे भलो अछि that doesn't belittle him. किंतु राम जेठमलानी थला criminal cases रे he was absolutely outstanding criminal law. मोतीलाल नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू को बापा थिले से सब मुस्लिम लॉ रे उस्ताद थे मुसलमान को लॉ रे he was मोहम्मदन लॉ रे he was expert बहुत पैसा बुझ पड़तो तो सब मोहम्मद अली जिन्ना was outstanding in criminal law outstanding बहुत पैसा से नेहरू पर किछि ता पाखा he was an outstanding criminal lawyer. जेतबेले आईएनए ट्रायल से आईएनए ट्रायल सुनिछो जो हितल 1942 रे जो सुभाष बोस सब लोक सब धरा पड़नथले आईएनए ट्रायल्स रे अरे जोड़ा सब सेकंड वर्ल्ड वॉर रे जो आईएनए ट्रायल्स हितला हां फांसी होता है नहीं से जो सब ट्रायल्स होतला रेड फोर्ट रे होतला लाल किला होतला हां सो से जो ट्रायल्स होतला जो मन को सुभाष बोस गोटे आजाद हिंद फौज करनथला से धरा पड़ले सब धरा जते पड़ले तांको ब्रिटिशर्स माने कहले प्रिजन रे कारण से सब इंडियन सोल्जर्स ना
अरे से इंडियन सोल्जर्स गुड़ा भारत ब्रिटिशर्स अगेंस्ट फाइट करते ना, सो इट वाज कॉल्ड ए ट्रिजन, बुझले तो। सो सेटा को ब्रिटिशर्स माने बहुत एडवर्टाइज करथा पूरा, बीबीसी पूरा रिपोर्ट करथा है, बुझी पड़छो तो। रेड फोर्ट रे ट्रायल होतला, सो ब्रिटिशर्स माने बहुत खुशी होतले जे फर्स्ट टाइम जो गांधी रियांगा माड़ा खाइबे, कौन बुझो तो कथा माने हाउ डू यू डिफेंड पीपल who are your soldiers fighting against you? Are you all getting me? बुझी पड़छो ना नहीं, आईएनए ट्रायल्स बुझी पड़छो, आईएनए जो सो सेई जो केस जेमते हला दिला गांधी देखला जे बड़ा पूरा माड़ा खाउचंती, सेटू से जवाहरलाल नेहरू कहले तू टिके जिना पाखु जा, जिना कह जाय कि से फाइट करिवो केसटा को। सो जिना put on his robes and he went to Red Fort. सेठू तांकु से ज्ञान देला दी दिन रे जे ट्रिजन माने कोन एंड हाउ दिस पीपल आर नॉट, दे कैन नॉट बी ट्राइड फॉर ट्रिजन। से कहला जे तांकु जेल हबो किंतु इट इज नॉट ए ट्रिजन। हाउ पैट्रियटिज्म इज नॉट ट्रिजन, तार से उदाहरण 2 दिन फ्रेंच रेवोल्यूशन आरंभ करी इंडियन अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस करी कोला, स्टिल कंसीडर्ड टू बी ए मास्टरपीस। आर यू गेटिंग मी? से कहला समस्त का नाक से काटी के आसला सेठी। सो से बड़ बुद्धिया थिला, एकुटे तुम देखियो तो फ्रीडम एट मिडनाइट देखियो तो सोनी लाइव रे होची, से एकुटे सफा कर दबो तुम तारो, से तारो किंतु बुद्धिया लोग, आउटस्टैंडिंग क्रिमिनल लॉयर। सो द शॉर्ट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट फॉर जुडिशरी टू बी इफेक्टिव इट रिक्वायर्स गुड क्वालिटी एंड डोमेन एक्सपर्टीज। ताहले से कोन हमारा से बुझी पारिबे, माने एमिते न जे सब कथा बुझुची, अरे सबू से ऑलराउंडर सर, ऑलराउंडर से ऑलराउंडर फंड चलिबनी सेठी। यू नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज़ द लॉ, प्लीज रिमेंबर व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज़ द लॉयर्स आर बेस्ड ऑन डोमेन एक्सपर्टीज। प्लीज नोट डाउन, तमे देखिबनी कोन से लॉयर जे सब कथा जानि छी, तो देखो जे कोर्ट जे देखो नहीं सर से क्राइम रे एक्सपर्ट, से सिविल मैटर एक्सपर्ट, देखियो तो कोर्ट रे देखिबनी को लॉयर कहबनी जे सर मु सब जानि छी, मो भेणे बहुत बढ़िया, से कहने मु सिविल मैटर मते कह, मते क्रिमिनल मैटर कहना। सो एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ता पहला इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे अछि, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन आर्टिकल 50। सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो ताहले एटा गोटा ऐड कली डेफिनेट आमे इंडिपेंडेंस कहूचे, से इंडिपेंडेंस ता बेसिक स्ट्रक्चर जाउनी, सेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आसी। प्लीज रिमेंबर दैट। तमे बारंबार कहउतलो कि इंडिपेंडेंस कहउतलो, मु जुडिशियल रिव्यू कहउतली, से इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज इन आर्टिकल 50। अरे बुझी पछु के नहीं, सेटा हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ता पर हला इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस। हमर मैडम कहिले फ्री लीगल एड, पूरा ताड़ी पकेबे एकदम पूरा फ्री लीगल एड 1976। नाउ आमे आसीबा पेंडेंसी ऊपर आसीबा, टाइमलीनेस। प्रथमे एक्सेस हला, एक्सेस बुझा गला, ता पर में पेंडेंसी आसीबा। पेंडेंसी लेखो ओनली 51 मिलियन केसेस आर पेंडिंग, टोटल 51 मिलियन। आउ 6.2 लाख होची हाई कोर्ट रे, आउ 80,000 अछि सुप्रीम कोर्ट रे। Now I am adding a depth to the answer. Please note down the ease of doing business. Please note down ease of doing business. एटा हमरो UN रे प्रति ease of doing business. World Bank रे होची। So as per the ease of doing business, India ra rank एबे अछि 63. Please note down 63. out of 190 countries, but in terms of enforcing contracts, please note down, our ranking is 163. Ta mane India is one of the countries where dispute resolution takes a very long time. Please note down, dispute resolution takes a very long time. Very long time mane average time is 3 years. Please note down, average time for a contract dispute resolution in India is more than 3 years. In Singapore, it is 3 months. One of the countries where ease of doing business is very, very good is Singapore.
तमे धर गोटे कॉन्ट्रैक्ट करिছো सिंगापुर संगे गोटे डिस्प्यूट हला इन 3 months time it is through. So the longer it takes, China for instance, enforcing contract takes very long, very less time. So that is why everybody wants to do business there. बुझी पड़छो तो जोड़ा ease of doing business टा सेटा टिके बुझे देबे सेटा केमि ease of doing business रे 13 टा पैरामीटर अछि. There are 13 parameters. Ease of doing business रे हला 13 parameters. First parameter हला जे getting electricity, getting land, getting loans. बुझी पड़छो तो for each of the parameters तुम टी पढ़ियो गूगल कर दबो. Each of the parameter रे तमर ओटा ranking अछि. So land पाइबारे, electricity पाइबारे, credit पाइबारे हां बुझो तो एगुडा करे सबु इंडिया रे बहुत इंप्रूवमेंट हे जाइछि. After the Modi government has come, there is a lot of improvement, particularly in these 3 areas: electricity, water, land acquisition. बहुत फास्ट होछि. ए डिजिटाइजेशन तो बहुत फास्ट होछि. माने से जत्ते जहाज ये कहू पछे things are much faster here. There is no doubt. किंतु एक कोर्ट को समाने सीधा कर पाले. बुझी पड़छो तो enforcing contract, it's a very long run process. Very long run process. So just take an example, 3 years versus 3 months in most of these countries. 3 to 6 months भितर से काम सफा. वर्षे कहर नाही. कारण गोटे डिस्प्यूट हल तो रिजोल्यूशन हला ताहल जाके तमे जीवन गोटे बुझी पड़छो तो. So therefore timeliness is very important. If you want India to be a global power, please note down, आमे विकसित भारत कहूचे, आमे ग्लोबल पावर अच्छे, सेही संगे ease of doing business रे enforcement of contract is also very important. भल होछ ना नै कथाटा. आमे एगुडा को सब टिके ऐड जदि करिवो तमे तो आंसर टा बहुत डीप हो. अदरवाइज इट इज अ वेरी जनरल काइंड ऑफ क्वेश्चन. पेंडेंसी बहुत अच्छी, एक्सेस मिलुनी, सलमान खान जस्टिस पाउची पाउने एमि किछि लाभ नै. अरे ऑल गेटिंग. सो देन ease of doing judicial vacancy. तापर गोट लेखा हला क्वालिटी रे देखो, collegium versus NJAC, collegium versus NJAC. collegium हला judge माने they are selecting the judges for high court judge and for supreme court. So that is through collegium. किंतु the better system would have been NJAC. आज गोटे खूब सुंदर आर्टिकल बाहर छी जे प्लीज नोट डाउन. तुम हिंदू टी पढ़ो लेकिन 50% of the judges they have found 50% of the judges in high courts and supreme courts are related to the judges. So very high degree of nepotism. Please note down. So ए जिनसरा आज ही बाहर छी. So एबे जो चीफ जस्टिस असते से माने कहउचंती जे जदी हमर कहा की रिलेशन थिबे तांको हमें कंसीडर करिबानी. 50% रो अधिका होची एग्जिस्टिंग जज मानकर पिला माने जियो माने भाई ए सब. सो नेपोटिज्म. अरे बुझी पड़छो ना नहीं. सो इंफ्रास्ट्रक्चर एउडा को सब नॉर्मल आंसर पाई जीवो इंफ्रास्ट्रक्चर रे. किंतु खाली नोट करो जे ओनली 48%, प्लीज नोट डाउन, ओनली 48% of the district courts have a e-filing facility. तमे तो एटा आंसर करिवो तमे किछि कंक्रीट डेटा को पड़िवो. प्लीज एटा खाली ओटे जनरलाइज लिखिवो जे लॉट ऑफ पेंडेंसी इज देयर, इज जुडिशियल वैकेंसी इज देयर. इंफ्रास्ट्रक्चर साइंस लिखिवो जे ओनली 48% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैव ई-फाइलिंग फैसिलिटी. तासे जानला जे ओटे माने ओनली 50% हैव ए ई-फाइलिंग कर परिबे. हाई लिटिगेशन कॉस्ट. अच्छा, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स हला 111/122. अगेन एडा को सब कंक्रीट डेटा ये न देले तुमरो मार्क से 4 तळे. डू यू एग्री विथ मी और नॉट? तुम यदि डाटा उडा न दबो ताहले तुमरो से मार्क से 3-4 रे 1 1 2 1 2 1 2 खाली गाड़ी चलिबो. सीटा को बढ़िया को पड़िबो ताहले जांकि तमे
Sir, lack of gender diversity in judges. Sir, lack of gender diversity in judges mention kariyo. Lack of Gender diversity in judges. करूची ना करूची अरे करूची बेसी झियो गुडा नाहांती झियो गुडा कहउछन्ते हमकु 33% आमे अछु हमकु रिजर्वेशन नाही केतना जज अछन्ती केतना लेडी जज अछन वर्तमान सुप्रीम कोर्ट रे एनीबॉडी केतना सुप्रीम कोर्ट जज अछन वर्तमान कहलो 33 टा जज अछन्ती केतना झियो सेत्र अछन्ती केतना जे कहि दबो से ताकू से 100 टका पाइबो जने बुद्धि आउ टिके कोडे इति सब बुद्धिया सब कोडे दुईटा झियो अछन्ती there are two ladies there are two judges who are so सेटा हो gender diversity so this is the last slide what are the reforms required बुझी पड़छो what are the reforms required बुझी पड़छो तो प्रथम आला डेटा लहेला तापर हमें रिफॉर्म दरकार प्रथम आरंभ कले access timeliness quality effectiveness yes expertise so हमें देखिए तो मास्टर ऑफ रोस्टर कौन कहे मास्टर ऑफ रोस्टर इशू कौन कहे सर मास्टर ऑफ रोस्टर इशू सुनो सेटा गोटे रिफॉर्म्स से सुनो एटा since you have mentioned this issue टी कोन आपन को असुविधा सेत्र होछ मते कहले टिके सर मास्टर ऑफ रोस्टर इशू कोन असुविधा होछि कोन असुविधा हला सर माने अन्य जज गुडा को हां को अदर जज सर कॉन्फ्रेंस माने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहितले जे एथरे नेपोटिज्म मतलब ये अंकल जज सिंड्रोम रे भले माने केवल नेपोटिज्म जो मान को रिलेटेड होछि सेहि मान को ही दिया जाउछि जेमिति सर जो गुजरात रे जो दंगा आइतले सेथरे जो जस्टिस जो ये करथिले हमरो हां क्लीन चिट देथिले ताको ही सुन टिके मास्टर ऑफ रोस्टर माने द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लीज नोट डाउन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया has the power to allocate cases to judges master of roster माने अरे हेडमास्टर को यदि ये न कहबो की क्लास नबो न को की न कहबो ताले अरे से भी इटी हेड ऑफ रोस्टर ना मास्टर ऑफ रोस्टर ना इटी chief justice has to be the master of roster there is no there can be no two opinions on that question is whether that chief justice is fair or not see jo fair pai there are certain conventions please note down there are certain conventions बुझी पड़छो माने how the chief justice will allocate cases that certain healthy conventions are followed now please remember if it is a constitutional case please note down if it is a constitutional case the 5 judges would a constitutional bench by minimum 5 darkar generally would be the senior most judges please note down this is again a convention तमे सेथरे चारिटा लोकन को जो बाकी तमे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस तमे दे निहाती यंगर लोकन दे दबो ताहले people will think जे तमे ताको फेवर करे पे कर so the convention in supreme court is that if it is a very important constitutional issue जो थे constitutional importance interpretation दरकार please note down constitutional interpretation दरकार so the bench has to be 5 and generally it would be the senior most 5 because the convention is that you expect that the senior people would be more experienced unless that person doesn't have any understanding of constitution ताले तमे काहा गुड नै जो किंतु जदि so by convention it hala number 1 number 2 hala बहुत बड़ा important case very important cases you जो थरे की जानु जे public eye is involved you don't give to a junior judge please note down you don't give to a junior judge if it is a matter of very major national importance समस्त देखुछन थरे कोन हबो बोली so say thare generally tame senior so one of the complaints against Deepak Mishra was Justice Deepak Mishra was that he used to give judges these cases to one Justice Arun Mishra who was very junior who was favorable to the government so the Justice Loya jo jaku mar deythile CBI judge ko mar deythile tar case ta ko taku deythile Arun Mishra को ଦେଇଥିଲେ କିଏ କହିଲା ଆମର ଦୀପକ ମିଶ୍ର ଦେଇଥିଲେ so that raised a lot of controversy ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛି ବିଜେପି ଲୋକ ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଛାଡି ଦବ ବୋଲି ତାକୁ ଦେଲେ so if the chief justice goes by the affiliation of a judge कारण ଯିଏ ବି judge ହେଉଛି
से गोटे पॉलिटिकल पार्टी रू सपोर्टेड होची आर गेटिंग मी पॉइंट प्लीज रिमेंबर इन अमेरिका मन रखियो इन अमेरिका आल्सो one of the criteria for selection of a judge is the ideological that the judge support the ideology of the party. There is a Trump hala chief jala president hala, so vacancy hala. So apart from competence, he also looks for somebody who follows the Republican ideology. Please remember that. Eita America re bahut openly achi. The constitution also provides for that. They will look for expertise and political allegiance. Kintu American je study कराई chi, there is a wonderful paper. But when the judges become the American say jo the judge hondi, they become extremely neutral. The beauty of American judiciary is that same judges, je ki Republican party rahi chuli koche, they give lot of judgments against. So say it has a true test of a judge. बुझी पड़छो तो कारण सेठी से माने judges for life अछंती. Please note down, this is very important. So tenure of a judge is very important. Tenure of a judge is very very important. से जानला जे मते जो बाहरी करबेनी मु जीवन जाक सेठी जज हेबी ताले तार दमटा रहे. He doesn't have to depend on a particular party. अमर कोन होची धर जी जज होची 2 वर्ष पर से देखियो तो कोटे ह्यूमन राइट्स कमिशन चेयरमैन मिलियो कि मु कोटे गवर्नर हे कि जीवे कि मु सिटी एम्बेसडर हेबी कि so they will so America they don't have to look for it. So there is a lot of prestige जानले जे जे पर्यंत काम बुंड काम करूची गोडो काम करूची से जज के राइट. There are many judges who are there. So one of the judicial reform that is required, tenure of the judges. गोटे जज रे गोटे भलो tenure हला ताहले तकर independence बेसी हो. Have you understood? So so the point which so master of roster टा बुझलो तो master of roster रे convention होची जे तमे senior लोकन को दबो तमे दे senior लोकन को न देकि जदी तमे junior लोकन को दोचो कि तमे जानु छे एई लोकटर ताको सुहेला वाला दबो. तर कलकत्ता high court रे there are many judges who are against Mamata Banerjee. So chief justice will give cases जोटा इन्वॉल्व करछि ममता बनर्जी को सर ताको ता अगेंस्ट पार्टी को देबे से ताको जजमेंट किंतु इट डजंट हैपन इन अमेरिका. अमेरिका से माने बहुत न्यूट्रल रहंती. थर जज बसिगला परे तांको आ तुम पाइबा भारी कष्ट, वेरी डिफिकल्ट. आर यू ऑल गेटिंग इट? एनीवे so now reforms required. Let's take quickly 5 minutes and finish this. First hala very important hochi use of technology. Please note that use of technology. And for instance, AI assisted case management, digitized records, video conference, online case filing. एगुड़ा सब एथरे खूब भलो काम करके जाइछि चंद्रचूड़. YV Chandrachud has played a wonderful role in digitization of records. Bartaman sabu judgment in different languages रे they are available. It is accessible to everybody. माने हमर जो माने ता विषय खाली से केमती गणेश पूजा रे प्राइम मिनिस्टर को नेला कि हमकला से विषय ने कहउछन किंतु if you really look at the quality of work that he has done, it is absolutely marvelous. The way technology has been used, एबे सुप्रीम कोर्ट रो कोन से जजमेंट तमो लैंग्वेज रे it is accessible. You can read that. You can read that summary. You can read that. There's something called Manu Patra. Very very good. Whenever a judgment comes, 600 page, 700 page, mu immediately next day kim likhe. I go through Manu Patra very quickly. I write the next day. So technology can be very fast. Are you getting my point? तब इतने समय लगे. तापर लोग alternative dispute resolution, arbitration. Please note down. Arbitration. तब instead of coming to the court, you go to an arbitrator. So that time will take much less time. It will take. माने you should go more for arbitration. जो गांव गुड़ा रे पंचायत न थिला, आगुर गाँव रे कौन होतला? पंचायत थिला. पंचायत रे संग संग dispute होता. So alternative dispute. तापर हम लोग नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म 2011 टा पढिबो. नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स एटा टिके पढिबो तमे नेट रे कोन तार फीचर सेटा बेसिकली से लिवरिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटाइज रिकॉर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंस एटा होची नेशनल मिशन. एटा ऊपर दी लाइन लिख दो.
एटा होटे कंक्रीट तमरा आंसर आसीबो तम लिखियो जे एटा रहला तापर हला आउट देखो अंडर ट्रायल्स टुडे हमर टोटल अछंती केते अछंती प्राय 5 लाख जेल रे अछंती प्लीज नोट डाउन अराउंड 5 लाख पीपल आर इन jail of which about 76% are in under trials कहार 10 वर्ष कहार 15 वर्ष सब खाली पड़ रही under trials. India is the only country where the percentage of under trials, this is a major judicial reform which is required. So Chandrachud कहतला जे हमें जो माने सब 10 वर्ष हे गलान जहार अंडर ट्रायल अछंती छाडी दियो समरी ताको छाडी दियो सर खाली सर बहुत लोग अछंती खाली पड़ी रही छथि माने इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम अबाउट 80% people are under trials. So fast track courts अच्छा आउ गोटे हला फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स तारीख पे तारीख तमे मु थरे हाई कोर्ट जाइथि दिल्ली हाई कोर्ट जाइथि से प्रथमे देखियो जे केते जणा एडजर्नमेंट आछंती प्रथमे से माने एडजर्नमेंट उडा दे देबे तमे भाबियो जे बहुत रे केस है सॉल्व हो गला 60 टा दी केस थी बस रे 50 टा थी एडजर्नमेंट खाली नेक्स्ट डेट को सो दिस इज अगेन अ मेजर इशू इन इंडिया फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स जहार पैसा अच्छी से जानला जे सला पैसा दी मोर अच्छी मु 3-4 वर्ष केस टा गोडे दवर कोन असुविधा केस टा ही आस परिबोनी तुम पाद घसी जीवो मोर मने अछि हमर जने सीनियर मोर थिले तंकर ही वाज ओवरलुक फॉर प्रमोशन से प्राय 4 वर्ष दिल्ली हाई कोर्ट का आस्तले मु तंकर जूनियर थिली ताको केस टा मु ही हैंडल करथली से 4 वर्ष पर से जज को कहले जे मु आ एडजर्नमेंट दरकार नै मते जहा अछि अपन कहि दोंतु मोर हबनी केसटा फिर जज कहले नहीं ठीक अछि काली आसे कहले नहीं सर मते आज ही कोंतु मोर बहुत कथा सुनले खाली एडजर्नमेंट के एडजर्नमेंट अरे गेट मी इंडिया इज वेरी नोटोरियस फॉर एडजर्नमेंट लैक ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी कॉम्पिटेंस कुड इंडियन जुडिशियल सर्विस दरकार NJSE in place of collegium and most important hala constitutional supremacy protect fundamental rights and enforcing rule of law और last point lekho constitutional supremacy protection of fundamental rights and enforcing rule of law out last kotha lekho je government is a litigant please note down government is a litigant in 50% of the cases please note down in 50% of the civil criminal cases civil and constitutional cases government is the litigant puchto human rights abuses 50% more than 50% of the cases involve government as a litigant so therefore the judges have to be impartial. But one of the major requirements of judicial reform is how they deal with government cases in an impartial way. Instead of looking for good postings, good placements after retirement, how they are fair in dealing with the government. बुझो तो जिमती आज गोटे बुलडोजर जस्टिस से बुलडोजर चढ़ो होतला से जज जदी कहबो जे नाही तू बुलडोजर चढ़ी परिबनी till you know that he is a criminal. Are you following me? अरे गोटे जो किए करथा जजमेंट देला बंद देला तो कहि दो की कहला कहला टी होबो को जजमेंट कहला जे बुलडोजर करि परिबो बुलडोजर चले परिबो till the crime is proved. Justice Gavai, please note down, he will be the next Chief Justice of India. Justice Gavai, Javai, he is a scheduled caste. He is a scheduled caste. He will be the second scheduled caste to become Chief Justice of India. Can somebody tell me who was the first one? Chief Justice Balakrishna. Balakrishna was the first Chief Justice and second would be Justice Gavai. Both badhiya. Very, very good. Justice Gavai. से कौन कहला जे तमे बुलडोजर चढ़ी परिबनी जे पर्यंत तमे प्रूफ हेनी जे से उडे क्रिमिनल बोली. So therefore judicial reform re one of the percentage that you have to see that somebody is independent minded. You have to see
तारा जो सेट में जजमेंट पढ़े पड़ो जे हाउ इंडिपेंडेंट इज समबडी यू नो सो दैट इज व्हाई व्हेन दे सिलेक्ट जजेस दे रीड जजमेंट्स केते जजमेंट लिखी केते जजमेंट रे से तारो फेयरनेस आछी क्वालिटी देखिए one of the things Chandrachud has done so they get through 15 20 टा जजमेंट खाली देखिए जे कौन से लिखी quality of judgment. Are you all getting me? So it is just not independence, it is the quality of judgment. It is also competence. They are very, very important. A reform रे हमें खाली pendency pendant देखले 3 मार्क को 4 मार्क को यदि एमती करके सब गुडा कवर करिवो ताल तुमको भलो मार्क मिलबो बुझ पड़छ तो कथा आर यू हैप्पी सर तेनु आमे बाकी क्वेश्चन आ गोटे दिन करबा बुझी पालो कि नहीं तब हो आज कौन टा करियो मते कहलो टिके कौन टा को क्वेश्चन टा करियो को देची क्वेश्चन टिके चेष्टा कर आंसर कर ना भूली गला सेटा ओले देइथिल गोटा Fundamental right is superior to DPSP. Please bring out the contending argument for and against this statement. Superior to or fundamental right. सर साउंड आसुनी सर साउंड सब दोरेनी लास्ट जे मु रिक्वेस्ट करबी जो माने आसी परिया कथा ऑफलाइन आसी की जॉइन करो कारण एमती क्लास वेरी रेयरली मिलिबो एते डिटेल रे यू कैन नॉट गेट एनीवेयर तमे एते डिटेल रे कोठी भी माने आंसर को तमे एनालिसिस करिवा पाइबोनी सो ट्राई टू कम टू ऑफलाइन जो एई भले सान कर जेते क्लास रहू जे तो आसी की you can directly interact कारण ऑनलाइन ने टिके इंटरेक्ट पई प्रॉब्लम होथो तो ऑफलाइन हां ऑफलाइन ने जो माने आसी पारुछ पाखे रहूछ यू कैन कम ये भले क्लास माने लॉट ऑफ थिंग्स हमें सिखि परिबो एथरो केवल माने एइडा नहीं माने जणा नहीं क्वेश्चन कोन आसीबो किंतु क्वेश्चन जहा आसिले हम केमती आंसर करिबा सेइडा यू कैन लर्न ए क्लास रे हमें एटा गुटे सर गुटे खाली पर्टिकुलर क्वेश्चन करू नांती तार रिलेटेड एते जिंस सर कहू छंदी जो एग्जांपल थ्रो रे सर कहू छंदी तो माने माने ए लेवल ला तमे एक्सपीरियंस पाइबा और डायरेक्टली जो प्रैक्टिकल कथा उडा को सुनिबा यू कैन नॉट गेट एनीवेयर इन बुक वो बुक रे भी पाइबनी कि नेट रे खोजले भी पाइबनी सो लैंग्वेज गोटे नुवा कथा के कहइबो हमर छोटो कथा मु लास्ट कोची तर आमे सीधा क्वेश्चन करते और क्यों आसीला ताकोडे जे पचार से देखि सब कथा समझते को लागू कर तमे कोन व्हाट यू थिंक यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल कोन बात ओके द प्रिसाइजली आई गेट इट दैट्स आल्सो डिफिकल्ट so they get to very particularly what is the new thing that you are bringing to the table कोन बात से किसा कथा कथा कहले सु कहले तो ज्यादा भाई okay ठीक अछि thank you everyone and good night to all so we will meet in the next class.